1977, the first order of the Volume 7 बेटा पेज सर इसका पेज है 3 Volume 7 मिल गई। अब इसका पेज बता दें। अब इसका अगला पेज सर पैरा 5 पेज 3 से शुरू होता है पेज 4 पे पेज 3 से ऑर्डर शुरू होता है। दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ा था ना। इसी में आ रहा है ना जी। अब इसके अगले पेज पे आइए पैरा 5 देखिए। यस रिट्रैक्ट्स पढ़ूं सर मियां कुर्बान सादक इकराम has also laid information before this court in writing today which is to the effect that his client Mian Muhammad Abbas accused retracts the statement made by him under section 164 CRPC on the basis of the allegation that it is not a free and voluntary statement insofar as it was obtained under influence and coercion. This information be placed on the record. His correct name is Mian Muhammad Abbas या मियां गुलाम अब्बास? नहीं गुलाम हुसैन है, ये मियां मोहम्मद अब्बास है। He was director FSL. अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर जी। May I proceed further? अब ये जब आया क्योंकि he was accused, then he was examined under section 342. He was examined under 342. Now kindly see what did he say in 342. Which volume? Volume 4. Volume 4 starts at 817. Page 817. Relevant is at page 854. जी हाँ कन्फेशन की बात की एंड रेलेवेंट इज पेज 854 वॉल्यूम 7 पेज 854 दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस अक्यूज अंडर सेक्शन 342 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इतने सवाल पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 60 वो सर बहुत पूछे गए 60 नहीं है 61 है। आपको you're reading question number 61। ये है ना जो रेलेवेंट बाकी भी है पीछे बट टाइम का आज फिर मसला है ना जी। पेज कौन से पेज सर 854 जी जी। Question is it a fact that you made a voluntary statement under section 164 CRPC which was recorded by Mr. Zulifqar Ali Bhutto, Magistrate First Class Lahore on 18th of August 1997, Exhibit PW 10/9-1 वो जो उसके ऊपर भी एग्जिबिट लगा। अब आंसर अगले पेज क्या है 855 पे। दिस पढ़ूं सर जी। पानी की तरह This statement was made while I was in custody of the FIA and under duress as well as promise, etc. I retracted from this statement later. क्वेश्चन नंबर Clear, sir? 61 नीचे जवाब अगले पेज। जरा फिर पढ़ देंगे मलिक साहब प्लीज। Sir, mic pleasure, sir. Page 855. क्वेश्चन 61 क्वेश्चन नहीं सर क्वेश्चन का आंसर अगले पेज पे है ना। आंसर पढ़ो। क्वेश्चन 854 पे है 85। अच्छा इधर जरा गलत हुआ है, इधर 855 पे और आंसर 856। सर ऐसे ही है। ठीक हो गया। आप अंदाजा लगाए ना कि हमें कितनी डिफिकल्टी आई है। ठीक हो। The statement was made while I was in custody of the FIA and under duress as well as promises, etc. I retracted from the statement later. ठीक हो गया जी। वो कस्टडी में था तो फिर तो स्टेटमेंट उसने उधर उससे पूछा गया था कि आपकी कस्टडी में नहीं सर स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही कस्टडी में हुई ना। इसको पकड़ लिया गया एज एक्यूज। रिट्रैक्ट करने के बाद इसके बाइंडिंग इफेक्ट है कोई? आपने नहीं वो तो स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड पे है ना। बाइंडिंग तो रिकॉर्ड पे तो है बट आप सर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। उसी की हद तक कर सकते हैं ना आर्टिकल 43 कानूनी शहादत के तहत। तो उसके आर्टिकल 43 के आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। इट इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड अगेंस्ट हिम ओनली। नो वो अलग बात है। वो उस पे ना मैं मेरे में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं।
एक फैक्ट आपके सामने आ गया जी। अब देखना यह है कि प्रोसिक्यूशन ने या कोर्ट ने, प्रोसिक्यूशन ने नहीं, कोर्ट ने इसको बिलीव क्यों नहीं किया। अब कोर्ट, हाई कोर्ट का मैं ऑर्डर पढ़ के आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं किया, फिर सुप्रीम कोर्ट का पढ़ के बताऊंगा, और फिर मेरा आर्गुमेंट होगा कि इसको कंसिडर ना करने की वजह क्या है। वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रिपीटेडली आई एम यही ग्रेटफुल तो टू क्लैरिटी चाहिए ना। हाँ जी, मलिक साहब, यही तो क्लैरिटी चाहिए कि जब उसने रिट्रैक्ट कर लिया 342 में अपना प्रीवियस स्टेटमेंट, तो आर्टिकल 43 के तहत अगर आप मानेंगे भी तो सच कन्फेशन विल बी ट्रीटेड ओनली अगेंस्ट हिम, Sir, this नॉट is- अगेंस्ट द को-एक्यूज्ड। no, I am sorry, I could not. Basically, what you are saying, it undermines the credibility of Masood Mahmood. Yes. To this extent, you can read it, Yes. not to be used against anybody. ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं शायद कामयाब हो जाऊँ। सर मेरी सबमिशन सुने। Your lordship is correct, very correct, कि this confession which is rejected may be considered against the accused. The court may come to the conclusion that no, there was no duress, there was no pressure. But they have not considered. But this document is there. But your lordship can consider this document to assess the statement of Masood Mahmood, because it is totally in a different direction. On material particle, he is contradiction Masood Mahmood, and that is the reason the court did not accept his statement. Otherwise, had it been in line with the statement of Masood Mahmood, they would have accepted their statement not against him but against the Prince Zulifqar Ali Bhutto as well. This is my submission. आपके कहने के मकसद ये है। समझ गए आप ये- Sir, आगे बढ़ गए। As a circumstantial evidence. Yes. As a circumstantial No, evidence. not circumstantial evidence is altogether different. Then- It is a circumstance. Yes. It is Undermining the credibility of the Yes, sir. approver. Well, yes. I think to this extent. Yeah, quite right. ये बताना चाह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से विटनेसेस को मॉल्ट करना चाहते थे, जो इंटेंशन था। नहीं, ये भी फिर मैं वही Inducement or duress or मैं ये अर्ज कर रहा ठीक है, हूँ, समझ गया। इसको नहीं आपकी समझे बात नहीं ना जी, आप मुझे मौका दीजिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि this document is an exhibited document duly proved by the magistrate, right? Now this document court has not considered against Mia Abbas on the ground that this is not voluntary. वो मैं पढ़ूंगा. My respectful submission, as the Honorable Chief Justice has rightly observed, very aptly observed, it appears that it is a very vast experience of criminal trials. This lordship is of the view, and this is my submission, that you may consider, rather you must consider this document when I will go to the statement of Masood Mahmood, because he says I conveyed the direction of the Prime Minister to this witness. And what was the direction? Direction was that since you have already been conveyed this direction through the former DG who was dead later on, so please execute that. This, he has not uttered a single word about that. He has narrated altogether a different story. Now may I just ask a related question? We've understood this point. Did Mr. Mia Mohammad Abbas enter the witness box? Sir, we cannot. No, yes or not? Not. But Okay. next is ठीक, why. but that's all. That's why- I've understood, but that's all. ये भी जरूरी है ना, क्यों नहीं आया witness? See, he can come as a defense witness. He's come as a witness for himself. He can come a 342 witness. वो अलग बात करें ना. यही मैं पूछ रहा हूँ. Sir, वो witness नहीं That's है. why I'm saying, did he come on the witness board in any capacity? No, Other than 342 is not an oath. ठीक है. That is not the witness then his statement is recorded under section 340 subsection 2, that is a statement on oath. जी. But anyway, so I hope I have been able to Yes. clear. Now I will go to the, sir, I'm clear now? Yes, please. Thank you, sir. अगला सवाल अगर आप पढ़ लें, मलिक साहब, अगला सवाल अगर आप पढ़ लें तो पता लगता है कि जिसको महमूद अब्बास को बनाया गया अप्रूवर, इसको भी ऐसे अप्रूवर बनाने की कोशिश की गई है। हाँ, वो कहता है, वो
कहते हैं जवाब ना इसका पढ़ दें अगर आप वो तो ठीक ज़रा है, पढ़ रेलेवेंट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ लेते हैं, दिखाना भाई पेज वो आओ कौन वही से है 855 62 question number 6. हाँ डिफेक्ट मैं पढ़ लेता हूँ जी क्वेश्चन इट इज इन द एविडेंस दैट आफ्टर नहीं मेकिंग वो इसका जवाब पढ़ लें खाली जो आप पढ़ लेता हूँ The factual matter would be that I was asked to become an approver and I was shown a sort of plan to embark on, but as I did not and could not fulfill the demand, therefore I did not opt to become an approver. Instead, whoever some other officers were made approver, and in my very presence telephonic calls were being booked from direct dialing or otherwise in order to find out how the matter stood. It may not be out of place to say that most unfortunate part of the statement made by me is that the very statement was given to Inspector Muhammad Aslam Sahi and he took it to the office of Chaudhry Abdul Khalik, Deputy Director. Even there I was asked to have said this and not said that, etc. बस मैंने सब यही कहना था कि अप्रूवर बनाने के लिए इसको भी कोशिश की, नहीं बना। डिमांड दी गई, लेकिन महमूद अब्बास एक बन गया। ठीक, अब मेरा पॉइंट ये है कि हाई कोर्ट ने इसको डिस्कार्ड किया ऑन द ग्राउंड कि हिज स्टेटमेंट इज नॉट in line with the prosecution story. और सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 130 ये एग्जैक्ट वर्ड्स इस्तेमाल वर्ड टू दिस इफेक्ट जरा बताएं। मैं बता सकता हूँ सर। हाई कोर्ट का जजमेंट दीजिए। पेज है इसका हाई कोर्ट की जजमेंट का 655 PLD 1978 सुप्रीम हाई कोर्ट लाहौर और इसका पेज है 655। ये शुरू कहाँ से होती है? ये रेलेवेंट ये वाला ये डिस्कार्डिंग वाली बात ये वही पढ़ने लगा 655 पे है। 655 जजमेंट की citation थे? जजमेंट की PLD साइट 1978 लाहौर मैं सर वो बताता हूँ 78 लाहौर पेज 523 सर 523 मेरे ख्याल में पेज 665 पे ये बात आ रही है। कौन सा 655 पे 665 पे जी 655 पे सर। हाँ पैराग्राफ 577 सर ये पेज 655 है सर 655 ये 655 पैरा 555 577 जी 577 जी 6523 जी let's read it. Please. It may be stated that the statement of Mia Muhammad Abbas, Exhibit PW 10/9-1, is partly self-exculpatory. He, however, confessed in that statement, having talked to Ghulam Hussain on the subject, that the mission about Ahmad Raza Kasuri should be executed with all haste, since he was informed by PW2 that the principal accused was angry. On another occasion, he admitted having asked Chaudhry Abdullah, Deputy Director, to bring around Ghulam Hussain with the same end in the view. The exculpatory part of the statement is clearly proved to be incorrect by the prosecution. By the prosecution. एविडेंस। हाँ अब वो भी तो प्रोसिक्यूशन का विटनेस है ना जी जब उसने स्टेटमेंट दे दी। अच्छा by the prosecution evidence there is no reason to take it into consideration. So they are taking the inculpatory part into consideration. No जो कहते हैं जी अब स्टेटमेंट को कंसीडर ही नहीं नहीं ये नहीं कह रहे हैं ना। यही कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? The exculpatory part of the statement is clearly proved to be incorrect. By the prosecution evidence there is no reason to infer take. आप कर सकते you can infer कि उन्होंने पूरी स्टेटमेंट की बजाय कहा कि इनकल्पेटरी पार्ट के बारे में खामोश हैं और exculpatory को exclude कर रहे हैं, which as per settled law is you have to take the whole statement as बिल्कुल वेरी राइट। अब होप आई एम क्लियर नाउ। यही है ना ये आर्टिकल 43 जो मैं आपसे बता रहा था सर यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी बात 100% दुरुस्त है कि उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये तो पॉइंट ही नहीं है। पॉइंट ये है कि एक डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड पे है जनाब तो उसको देख सकते हैं दूसरे गवाह के लिए
एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस की आप बात कर रहे हैं ना कि उसका स्टेटमेंट एडमिसिबल है या नहीं? नहीं वो नहीं, स्टेटमेंट तो एडमिसिबल है, स्टेटमेंट तो लिखा है मैजिस्ट्रेट ने, कानून के ताबे लिखा है, मगर वो कहते हैं क्योंकि ये इसमें अगर आप उसके इफेक्ट पे बात नहीं कर रहे ना कि अगर एक आदमी उसको रिजाइल हो जाए अपने स्टेटमेंट सर मैं कह रहा हूँ आप उसकी जब एक आम मर्डर ट्रायल के अंदर या कोई भी क्रिमिनल ट्रायल के अंदर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट रिट्रैक्ट हो जाता है तो उसका जब जजमेंट लिखा जाएगा तो उसको क्या आप रिट्रैक्ट को बोलेंगे नहीं ये ठीक है हम मान रहे हैं नहीं सर मैंने ये कहा ही नहीं। नहीं मैं इसको बिल्कुल सही, आप 100% सही समझे हैं। जनाब का कहना यह है कि अगर एक स्टेटमेंट एक्सकल्पेटरी है या वो किसी और रीजन से कोर्ट कहती है कि ये कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करती, ये अंडर ड्यूरेस है, ये है ड्यूरेस की बात उन्होंने की, वो उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ना को कि उसके खिलाफ इस्तेमाल हो। ये बात आपकी 100% सही। मेरी कंटेंशन ये है कि ये स्टेटमेंट इज ऑन द रिकॉर्ड। अब जब आप मसूद महमूद की एविडेंस को देखेंगे तो उस वक्त इसको कंसिडर करेंगे कि ये मसूद महमूद जो कह रहा है इस गुआ ने वो इस मुल्जम ने वो नहीं कहा अपनी स्टेटमेंट में जो मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड किया। मेरा पॉइंट ये है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का भी मैं जनाब हवाला दे दूं। नहीं मैं इसको बिल्कुल एक और तरीके से देख रहा हूँ। आई से द हाई कोर्ट हैज रिलाइड ऑन दिस स्टेटमेंट। ये आपकी बात भी सही है। नहीं क्योंकि ये देखिए ये जुमला लिखने की जरूरत नहीं थी। ही हाउएवर कन्फेस्ड इन दैट स्टेटमेंट हैविंग टॉक टू भाई तो वो ही इज द हाई कोर्ट इज ओनली एक्सक्लूडिंग द एक्सकल्पेटरी पार्ट ऑफ इट बट वेयर इट हेल्प्स द प्रोसिक्यूशन केस there seems to be reliance on the statement. You can draw the inference because इसमें basically तो this was in response to justice। ठीक है समझ गए। अच्छा अब इसको देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी देख लीजिए। PLD मेन वाली ना मैं मेन से ही रेफर कर रहा हूँ। अच्छा मैं कोई चीज रिव्यू वाली में तो नहीं जा रहे। नो और ये भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आई एम रिलाइंग ऑन द जजमेंट ऑफ द कोर्ट विच इज द मेजोरिटी जजमेंट। मैं दूसरी जजमेंट को टच ही नहीं कर रहा। अच्छा इसमें हम कहाँ देखें? इसमें जनाब आप देखें पेज 109 पे ये जजमेंट है जी। 53 पे 53 ये तो सबको याद है। 133 पैरा 133 दोनों जी। A perusal of the confessional statement 109 जी page 109 जी sir 109 A perusal of the confessional statement made by appellant Mia Abbas under section 164 of the code shows that he tried to exculpate himself by laying the blame on approvers Masood Mahmood and Ghulam Hussain and incidentally implicating appellant Zulifqar Ali Bhutto in this crime. In the circumstances, this statement cannot be treated as a confession for the purpose of Section 30 of Evidence Act and was rightly not used as such by the High Court. अब उन्होंने भी यही बात की जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल किया कि उन्होंने कहा ये हम इसको कन्फेशन कंसिडर ही नहीं करते। मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कन्फेशन कंसिडर ना करें बट ये बात तो रिकॉर्ड पे आना किसने कहा क्या। अब जब आप मसूद महमूद को देखेंगे कि भी उसकी स्टेटमेंट की corroboration सबसे ज्यादा यहीं से मिलती है। अगर ये इन लाइन होती तो फिर तो वो बड़ा मेरा ख्याल राइटली उसको मानते। अब ये मेरी इसमें सबमिशन है। आई होप सर आई एम क्लियर। Yes. आई एम क्लियर। नो सर नो आई विल प्रोसीड। यस्टरडे सर Is it a good point to ask a few questions? Always. No, because I want to finish with the approval statement. सर उसमें थोड़ा टाइम मुझे दे दें। मैं 15 मिनट मुझे दे दें अनइंटरप्टेड। ठीक। आप No, tell me whenever you want, then I'll ask. वो मैं जरा थोड़ा सा मैंने जो तैयारी की है ना चलें मैं उसको थोड़ा सा अपना बता दूं फिर जनाब सारा दिन सवाल पूछें। आई हैव नो नहीं आप चलें नेक्स्ट। अच्छा जी वो I will recapitulate the examination chief of the approver for the benefit of your lordships in just 3 minutes, not more than 3 minutes.
Sir, is examination in chief spread over more than 18 pages, but I read only 10 or 9 or 10 pages and relevant part. The first part of his statement is a CV of Masood Mahmood, wherein he stated that he joined the police service in 1949, then he remained posted at Karachi here and आगे बढ़ें, we've done Sir, अब आगे sorry I have to keep you pushing Sir, because I am also running against time. मैंने 3 मिनट लिए आपसे 3 मिनट अब मैं मुझे करने तो दे ना जी फिर वो आगे बढ़ जाऊंगा फिर मैं वापस ही बढ़ जाता हूँ अब मैं थोड़ा सा टाइम दे दीजिए मैं आज इसको yes. सर मैं 1:30 बजे से पहले इसको कंक्लूड कर दूंगा ये टाइम आप नोट कर लीजिए 1:30 टाइम नोट कर लीजिए मैं इससे पहले इसको कंक्लूड करूंगा बट सर बड़े इंपॉर्टेंट है बड़ी ही ईमान से मैं ऑनेस्ट बात करूं एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और जनाब जब तक सुनेंगे नहीं हम सुन रहे हैं आप और दूसरी बात यह है कि जब तक समझेंगे नहीं उसको यूज नहीं करेंगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे मौका दीजिए जी करें सर अब वो मैं बात कर रहा था कि 3 मिनट में आई वांटेड टू रिकैपिचुलेट नाउ it will be 4 minutes. He has given his CV. He joined the police service, remained posted such and such to East Pakistan, came back and he was posted in establishment division, then a punishment post, and then comes the story. He was called by Mr. Wakar, who was establishment secretary of the time, and he was conveyed the message that Prime Minister wants to see you and you must accept the offer which is made to you. First meeting with the Prime Minister praises his integrity and hard work and offered the job of Deputy Director General FSF. And then Prime Minister said, I want to make this force a deterrent force so that people must have fear of it, and the purpose of the force will be to disperse the rallies, this and that, and to send a person in plain clothes to in the meeting, at the gathering, whatever. And to this extent, he has not raised any objection. He said, okay, this is my integrity permits me to do so. He accepted the job. And then comes the second part. Second part was that he called me and then he narrated an incident of National Assembly where it is the prosecution case that the Prime Minister of that time, Zulifqar Ali Bhutto, without the Speaker's permission stated that I am fed up with this man and I cannot tolerate this nonsense anymore. Then he called this man and asked him, a task has been assigned to Mia Muhammad Abbas through your predecessor and you please ask him. This man is shaken by hearing this word and pleads, sir, no, this is against my conscience and dictates of God, I can't do that. Anyways, in this perplexed condition of mind, he comes to his office, called Mia Muhammad Abbas and said, I repeated these words verbatim. And then thereafter he says, I was reminded by several times by the Prime Minister, goaded by Saeed Ahmed and Bajwa, and ultimately he goes to the Multan, and then the news came that there is a firing at Lahore, and instead of Kasuri Sahib, his father has been murdered, and this was a surprise for him. And then comes the point, the Prime Minister again asked him, you have not accomplished the task. He said, no, sir, I can't do this. It is against the dictates of God. Sir, abhi 1.5 minute hai. It is the dictates of God, and he says no to the Prime Minister. And this was the end. Ultimately, he was taken into custody, and that is the answer. No, this I have concluded. This was the brief summary of yesterday's proceeding, the last phase of the proceeding. Now, sir, the very important point now I will raise, sir. No, sir, it is in the experience of your Lordship and everybody who has practiced or is practicing on criminal side that in cases in our courts are decided on the evidence of the witnesses, I mean oral evidence. Very, very difficult task and very dangerous as well. Because in civil cases, you mostly rely on the document. Here you rely on the words uttered by the witnesses. And the test is very difficult. There is no scientific test to find out whether a man is speaking the truth or telling the lie.
No, but the law has taken care of the situation. Law has taken care of the situation, how to analyze the evidence, how to assess its worth, how to appraise, how to reappraise the evidence. The law has Evidence Act of that time. Now Qanun-e-Shahadat has taken care of that. I will draw your Lordship's attention to Article 2, Sub-Article 4 of Qanun-e-Shahadat. Mera kahan hai? Article 2, Sub-Article 4 of Qanun-e-Shahadat order. You refer to the Evidence Act because at वो that सेम time... है जी, वो सेक्शन 3 है उस वक्त. अगर वो आप लिखना पढ़ना तो चाहें वही चाहिए ना, क्योंकि एविडेंस एक्ट था ना. वही है सर, एक इसमें कोई चेंज ही नहीं. ठीक है. आप वो कहते हैं मैं वो पढ़ देता नहीं, ठीक है. If it's the same, एक ही then... चीज है, वो आपकी कन्वीनियंस के लिए है. सेक्शन भी वही है. 2-4. सेक्शन 3 है. Section 3. वो आप नोट कर लेना कि सेक्शन 3 ऑफ एविडेंस एक्ट एंड आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4 ऑफ कानून-ए-शहादत ऑर्डर, एग्जैक्ट सेम वर्डिंग. सो बड़ा ही ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आई नीड योर अटेंशन सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जी. Effect is said to be proved. Effect is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believes it's to exist, this is the one situation, or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the case, particular case, to act upon the supposition that it exists. That it exists. No, sir, it has two parts. First is the court consider that this fact does exist. Here the test is court's evaluations. In the second situation, the test is that a prudent man under the circumstances of the case ought to consider that it does exist. So far as first situation is concerned, example could be, sir, may I proceed, sir? जी. Something happens in this court. A lawyer claims that I have witnessed this, and his lawyer's case is fixed before your lordship. His name is reflected in the cause list, and his name is also mentioned in the order which has been passed by your lordship on the particular date of hearing. Here, the presence of the lawyer on that particular date, at that particular time, to that extent is effects which court will consider that it does exist. It does exist because it is so natural. And now I give another example from this case. The narration of the events of this sad incident at Lahore by Ahmad Raza Kasuri Sahab. He was driving the car, he was, his father, his mother, his khala, they were sitting in the car, they were firing at the car. To this extent, this fact, the court will say, yes, it does exist. More particularly, when none has challenged this. So this is the first situation. Now I am coming to the second situation. Suppose court says, we don't consider this witness on the first criteria. Then court will switch to the second criteria. What could be the possible example of that? Sir, we have a reporter in the court. They have association of the reporter, court reporter, and we see they are daily present in the court. If something is said by a reporter who happens to be present in court so frequently, then that is covered by that first category. But if some reporter or some media person who normally doesn't come to the court regularly, I don't want to name anyone, but if he says on particular date I was present, so that will be determined under second category. That will have to pass through the test of probability and standard of prudent man.
So these are the few examples that in one category you are so clear, you are so confident, yes, it does exist. In the second category, you will apply the test of a prudent man. In our cases, all 90% cases, always it is the second test which is applied. Now the question arises, who is the prudent man of law? It has not been defined, sir, anywhere. Who is the prudent man? It has not been defined. So, does prudent man means a jurist, a scholar, a lawyer of the caliber of Mr. Itizaz Hassan or Kasuri Saab? Are they the prudent man of law? My respectful submission is no. A prudent man of the law has the same meaning as consumer in economics and commoner in politics. That is the standard. A prudent man of law is not a jurist or intellectual, but he has the same meaning as consumer in economics and commoner in politics. And in this respect, sir, I will cite a judgment of the Lahore High Court. This is PLD, 2010 MLD, 2010 MLD 1612. एक किताब दे दीजिए For what? वो इसी पॉइंट पे कि प्रूडेंट चलें छोड़ें ये बात। सर एक बड़ा जरूरी है देख लें ये 2010 का जजमेंट है सर कुछ नहीं हो गया 2010 कुछ 100 साल पुरानी बात तो नहीं है कल की बात है हम चाह रहे थे 100 साल पुरानी बात अब वो भी बता देते हैं पहले ये तो देख लें सर थोड़ा सुन ले मजा क्या है I know but we will read it सर मैं उसको because I am only worried about something else मैंने आपसे ये कमिटमेंट कर ली कि चलिए पेज बताएं इसका 130 से आगे मैं नहीं जाऊंगा 1 पेज मैं बताता हूँ सर नहीं आप ही का जजमेंट है आप ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए चले नहीं मैं आप देख लेना जी आप पैरा 17 देख आप पैरा 17 पढ़ लें पेज है आप पढ़ेंगे प्लीज मैं पढ़ देता हूँ 1621 the main point The main point which is to be determined by this court is whether the story set out by the prosecution in the circumstances of the case is probable or whether the prosecution has proved its case against the appellant without any shadow of doubt. Article 2.4 of Qanuni Shahadat Order 1984 contemplate how effect is proved. It says, ये मैंने आगे 18 में, a prudent man is law is neither genius nor a goof, but has the same meaning as consumer in economics and common man in politics. So, important point so far as to determine the prudent man is that its definition changes with the circumstances of the case. When you are considering the evidence of the prudent man, in the case of a lawyer, the standard is different. When you are examining the case evidence of a police officer, the standard is different. When you are dealing with the case of KPP, the definition of prudent man will not be the same as it is in Punjab. And similarly, while you are dealing with the case of Balochistan, the prudent man of Balochistan is different from the prudent man of KPK. So that changes with the circumstances of the case. So the next question is whether the court will call some prudent man and get his opinion, because we are not having the jury system in our country. That is the reason it is said generally that all the lawyers and the judges who are practicing on the criminal side, they must have some idea of behavior, conduct, action and reactions of different segments of the society. A good lawyer ought to know how a particular community behaves. As we have in Punjab, I can quote 110 examples, but I will not. So this is the test which you will apply. Now, this test, when applied to the evidence of a witness, an ordinary witness, then the court, after applying the test, concludes whether his evidence is probable, whether it's inspired confidence or not. But in the case of a prover, the situation is altogether different. In the case of a prover,
it is almost settled that his evidence will be viewed with special care, and evidence of approval or accomplice cannot be viewed without natural reaction of distrust and incredulity. So this is the basic principle. When you start examining the evidence of the approver, so you will start with the negative. Okay, you will not believe this. And question arises why it is so. Why this care is to be taken while examining the evidence of approver. There are 4 reasons for that. 4 reasons. जी कुछ नहीं Number 1 is ये भिजवा दें he is self-confessed criminal. This is number 1 reason. He is self-confessed criminal because he is accepting his guilt. He accepts his participation in the crime. He is a self-confessed criminal. Number 2, he has betrayed his former associates. He has betrayed his former associate. गवर्नमेंट निकाल दो जी उसकी है इसकी जिसमें वो टेस्ट है डबल टेस्ट का यार नहीं पता. He, having betrayed his former associate, he is under the temptation of saving his own skin because he has been pardoned. He wants to save his own skin. And number 4 is he has a fear of prosecution. Under Section 339 of Code of Criminal Procedure, he can be prosecuted if he did not toe the line of the prosecution. These are the 4 reasons why his evidence, special care is taken while examining his evidence. Now I will read a little passage from the judgment of the Supreme Court of Pakistan, I mean the majority judgment, where exactly they have settled this point. They have relied on this. वो दीजिएगा यार कहाँ गई हाँ ये ले ली वापस नहीं जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज 53 दोनों सुप्रीम कोर्ट की ये सुप्रीम कोर्ट की है ना अब यही छोड़ दें paragraph sir 422. This is a judgment which was been discussed by the Supreme Court and then relied. Just 2 paras sir. Page? Yes sir, 196. जी Para 422. More recently, in the case of Dr. Muhammad Bashir, this court has expressed the rule as under. As a rule of prudence, which has almost hardened into a rule of law, it is dangerous to act on the uncorroborated testimony of an approver who is a self-confessed criminal having betrayed his former associate under the temptation of saving his own skin, suffering from the stigma and mark of depravity of character, and approver's evidence cannot be viewed without natural reaction to distrust and incredulity. His evidence must first be tested on the basis of probability or improbability, like the evidence of any other witness, and more strictly so in his case, because it is the statement of a person of suspicious credential. His evidence needs corroboration for the simple reason that it cannot be accepted without mental reservation and distress, and it must therefore gather support from other sources to induce faith in its veracity. अब मैं यहीं पे छोड़ के 424 पे आ जाऊंगा. ये अगर कहते हैं तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ. ठीक है 424.
I am in respectful agreement with the rule laid down in Dr. Muhammad Bashir's case by 4 learned judges of this court, and only wish to add that when the qualifying phrase "a reliable witness" is used in relation to an accomplice, the reference obviously is not to his moral character and dependability, as the courts are well aware that he is a self-confessed criminal, having betrayed his former associate under the temptation of saving his own skin, and it is precisely for this reason that special care has to be taken in the matter of appraisal of his evidence. The intention, therefore, underlying the first test is to determine whether his evidence is probable and natural in the circumstances of the case, with the result that he can be treated as a reliable witness and his evidence safely acted upon. If requisite corroboration is forthcoming, or whether it suffers from such infirmities and improbability that it cannot be said to be lacking an intrinsic worth. In the later stage, the question of seeking corroboration would hardly arise. That was the submission which I made yesterday. He is subject to double test. But if he fails in the first test, then you will not apply the second test. You will not ask for corroboration. No amount of corroboration will cure the defect. अब इसी पे now I am coming to the statement of Mr. Masood Mahmood. I read his examination chief, and yesterday I stated that I will not touch his cross-examination. Later on I will quote just few paragraphs from his cross-examination, but at the moment, while relying on this statement, I will show to your lordship that this is not natural. It doesn't fall within the category of first test, but you will, lordship, now will apply a second test on this statement and treating him as a normal witness, as if he is a normal witness. And if we are applying that test, no sir, his evidence I have read, is that part as I have read. Now sir, first thing which I will say, sir, after reading his examination chief, what emerges about his personality, what type of person he appears. If we accept his testimony, to what emerges about his personality. And we will accept you as a prudent man. No, sir, नहीं, अभी टेस्ट में अप्लाई नहीं कर रहा. वो a prudent man मैं नहीं हो सकता. वो डफर नहीं होना चाहिए. जी. तो मुझे बताएंगे तो मैं बता दूंगा कौन है prudent. I can't be the prudent man. लिख के दे दे. लिख के दे दे. आप लिख देंगे ऑर्डर में तो वो लिखा ही जाएगा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर. थैंक यू वेरी मच. What emerges from his statement, I'm just describing, if I have read a statement, so what impression I will form. What impression I will form, what type of person he is. So he is a career officer. He's a career officer. Nothing wrong or adverse on record against him. This is the second thing. Number third is an officer of integrity. This is his claim, and he says that even it was appreciated by the Prime Minister of that time. Zulifqar Ali Bhutto praised his integrity. So this man is with clean slate, very neat and clean person, having no negative point in his personality. On the contrary, what emerges about the personality of Bhutto? What emerges? I'm sorry, this would not be my personal opinion. I'm sorry if family member is sitting over here. This is not my opinion about the personality of Bhutto. Why do we have to go there? तो मैं देख रहा हूँ कोई गुस्सा आज कर नहीं, why we are going there? Let's stick to the witness. I'm just expressing my feeling that what words I will use, they may hurt their feeling. I was clarifying this is not my opinion. Let's avoid it. Let's avoid it. Don't compare him with the. No, sir, that is must. That is must. That is must. Why?
that is must ki one personality, other personality. No, but you don't gauge a criminal or a accused on how he compares with the proof. No, sir, I'm not. Please let me explain. Just be with me for 2-3 minutes. I will not use any negative words, but I will just say that if his evidence is considered, so impression about Bhutto is, I will use the soft word, that he will not tolerate any dissent, even in political matters. Number 2, According to this, yes, Mahmood yes, Abbas, yes, इसी की बात कर रहा हूँ. one opinion. यही मैं उसके कह रहा कहने के था ना. बाद, Yes, yes, yes. यही तो मैं He must get his way. हाँ, Fine. ये दूसरा कि वो he can go to the extent of taking life of his political opponent. ठीक. This is ये वो what, कह रहा है. This is their case. yes, यही मैं कह रहा था. जी. Ab now, your lordship will see what was the task for appointment of this gentleman. Now my submission will become relevant. What was the task? Number 1 was to raise the force, that is FSF, into a deterrent one, so that people must fear. And the force is to be used for political purposes. Number 3, the most important was to kill a political opponent. This is the task of the Prime Minister as per prosecution. And for that purpose, he is looking for a suitable candidate. That is the reason. Now question arises whether the Prime Minister had no other option except to appoint only Masood Mahmood. Had it been a position that Prime Minister had no choice, choice was very limited. You have to select a person who has served in East Pakistan, who has served in Karachi, and he is the person who fulfill all these requirements. Had this choice been... He was also God-fearing. He was also God-fearing. नहीं वो आगे बात कह रहा है. सर वो आगे आ जाएंगे चीफ साहब नाराज हो जाएंगे मुझे बात को कंप्लीट करने. वो अब ये वो कह रहा है. अब लॉ क्या कहता है, एफएसएफ का एक्ट क्या कहता है, इसके नीचे इधर ही मैंने रखा था, देखो ये. अब एफएसएफ एक्ट में ये सर एक्ट है 1973 का, ये है जी ना आपके पास, इधर प्लीज दीजिए जी. ये पास हुआ है जी ऑन 29th of June 1973. इसका सेक्शन 5 देखिए. जी. Appointments of officer of the force. For the purposes of this act, the federal government may, by notification in the official gazette, appoint any person who is or has been a member of armed forces, the civil armed forces or the police force. Now kindly see the choice of the Prime Minister. From 3 places he could pick a person who is serving army officer, who is serving in civil armed forces, and he is from police service, and even retire. Now the point comes when I said I will make this submission why this person will be chosen for the task. In his CV, he has not said anything which could make him relevant for the task. Had he said, sir, I was considered an encounter specialist, and in such and such time I killed such and such person, yes, then he could be a relevant person. But how the Prime Minister will go for this gentleman who is a neat and clean person, who is nothing adverse against him, and who has integrity which is praised by the person who is appointing him? Can any sane person will believe? Would any prudent man will believe this story? Would any prudent man believe this story? Why I will hire him? Why I will appoint him? Why?
Answer is no. And then, particularly when I have a wider choice, Your Lordship, I could go to the retired person, find a retired police officer, and then there is no condition that he should be a retired officer of grades 20 or 21. Even it could be appointed as retired SP could be appointed. So there were many, and particularly in Punjab, many could be appointed. But why? Why he was threatened to accept this assignment? Otherwise you have small children. Could it be a reason? So this was my submission, which I was making the comparison of personalities of the authority who has to appoint and the person who has been called for this. So my respectful submission is, if we will apply the test of prudent man, and Your Lordship think like a prudent man, not like a judge. If Your Lordship think like a prudent man, so there could not be any other answer, there could not be any other conclusion. He would not be offered this job. This is, Manzoor Malik, I bring another perspective. yes. Let's suppose for the time being, I hope you don't mind, I'm the Prime Minister, and I'm looking to appoint a Director General of FSF, and I want a man of integrity. And I say, I want you to kill my opponent. And you say, yes, I will. I will sack you there and then. And you may say, no, I will not, and I will appoint you. So it could be a test. You understand? No, no, are you following what I'm saying? I got your The point. mere fact that I've put it to you doesn't mean I intend to. If it's a time of appointment, at the point of appointment, I will ask you, are you prepared to commit a crime on my behalf? But- and he says, yes. It may be I don't appoint you. For that very reason, I it got may be a trick question. Let me explain. We are assuming. No, quite right. Ji. I will explain. Your example could be correct if in that meeting I appoint him, and before appointing I don't say to him that I want to make it a deterrent force for controlling my opponent. So this example doesn't fit in this situation. No, just to see your own integrity. No, I quite want right. integrity. I want crush my opponents. Yes. So are you prepared to commit a few crimes for me? And you say yes. No. First crime, first meeting में there is no mention of this killing. This is in the second meeting. In the first, मैं बात we समझ गया are हूँ. accepting whatever he said is partly true. I change the scenario completely. And I say it could be a test. नहीं वो टेस्ट इसलिए I mean, वो I don't know. नहीं बात आपकी बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल अगर आप इसको इस तरह लें कि आप एक बंदे को अपॉइंट करना चाहते हैं और आप समझते हैं ये इंटेग्रिटी वाला है, तो आप उसका टेस्ट लेते हैं कि यार मैं तुम्हें कहूँगा ये फाइल नहीं इस तरह कर दो, इस तरह कर दो. कहते हैं जनाब मैं बिल्कुल नहीं करूँगा. आप कहते हैं यार ये सही है, इसको लगा लो रजिस्ट्रार अपना. यही बात कर रहे हैं ना आप? Exactly. अच्छा. और इससे आप मेरा जहन में जो बातें आप क्या अंदाजा लगाएंगे? नहीं, आपने टेस्ट, हमने आप जैसे इंटेलिजेंट बंदे का टेस्ट अप्लाई करना ही नहीं है. हमने अप्लाई करना है प्रूडेंट मैन का. हमने आपका टेस्ट अप्लाई नहीं करना. ये बात आप इसको इस तरह देखें. बड़ी मैं समझ गया हूँ आपकी बात. क्वेश्चन ये है कि आप पहली मीटिंग में कहते क्या उसको? आप तो ये कहते ही नहीं कि मैं अपॉइंट करने लगा हूं. आप तो उसको कहते हैं कि मैंने एक ये फोर्स बनानी है, ये है वो है, और आगे से वो ये नहीं कहता. वो कहता मेरी तो इंटेग्रिटी, इस तक तो वो एग्री हो गया. मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं उसको बुलाऊंगा क्यों? या तो मैं आगे कुछ प्लान किया ही नहीं. आपकी मिसाल के मुताबिक ये तो उस हद तक खत्म हो जाएगी कि अगर ये टेस्ट तक थी तो ठीक है. उसके बकौल तो मैंने सारे काम करवा लिए उससे. हमने तो करवा लिए ना. हमने तो कह दिया बंदा भी मार दो, ये भी कर दो, वो कर दो. इसलिए ये पहला टेस्ट जो आएगा ये होगा ही नहीं. ये बंदा चुना ही नहीं जाएगा. आज भी इसी तरह अपॉइंटमेंट्स होती हैं. साहब इंटरव्यू करके जो भी करना है वो अलग बात है. अब ये दिस वाज माय फर्स्ट सबमिशन. This is my first submission, and I will request your lordship to, this is not the first category where your lordship will come to the conclusion that this fact does exist. This is the second category where the test will be of a prudent man. A prudent man. It's very difficult. You will assume. Manzoor Malik Sahab, I don't think we are getting too much here, because a prudent man
in a very first meeting with a stranger who doesn't he know, will tell him that actually I want to commit murder. I mean, would you accept that or that तो यही तो person? मैं- नहीं वो तो फिर यह हम बात समझ गए point। यही मैं कह रहा हूँ ना जी। या तो आप ऑलरेडी छानबीन कर चुके हो किसी की, तो वो ये इस किस्म का आदमी है, इसका रेपुटेशन है। नहीं सर, तो- नहीं, दूसरी बात ये है, असल में गलती प्रोसिक्यूशन से हुई या विटनेस बड़ा क्लेवर था कि वो अपनी कोई बुरी बात बताना ही नहीं चाहता था। असल बात ये थी, अगर तो वो सही देखें, अगर आप इसको, आपसे कुछ लीगल सवाल करना चाह रहा सर मुझे ये खत्म कर लेने दें, मैं लीगल भी बताऊंगा, फैक्चुअल भी बताऊंगा। ठीक। ये मुझे बस, मैं थोड़ा ही टाइम है, बस बेयर मी फॉर अनदर हाफ एन आवर, मैं मुझे कंक्लूड कर लेने दें ताकि मैं प्रॉब्लम है कि मैं जो कहना चाहता हूँ मैं कह लूँ। ये मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेकंड सबमिशन इज, एज आई सबमिटेड यस्टरडे, that whether if this statement of approver is accepted as gospel truth, yes, जो कहा ठीक कहा. So the first test is whether it falls within the definition of conspiracy as it is given in section 120A. May I read that section, if your lordship wishes? As you wish. Just बाकी भी शायद पढ़ लें आप। ये जी 120A, definition of criminal conspiracy. When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy. आगे explanation वो इतना relevant नहीं है। अब क्या ingredients हैं? Two or more person agree to do illegal act. For this case, this is relevant. So, if we consider the statement of disapprover, so what he said, may I read it again? He said, I was called in the second meeting. Prime Minister said, a task has already been assigned to Mia Ghulam Abbas through your predecessor to eliminate Kasuri Saab. And you please remind him and get it done. You will be held personally responsible. This was offer, if you take it in the civil law sense, a contract, an agreement. Agreement की definition वही है ना, कि जब आप एक acceptance है, offer है, acceptance है और consideration है. अब इसमें एक offer गई उसको कि भी ये काम करोगे. So what is his reply? He says, sir, I was shaken. I said, no, sir, this is not only against my conscience, but this is against the dictates of court. This is his statement. And then he said, Prime Minister lost his temper and I came. Actually, it was a direction. It was a direction by the Prime Minister. ना मैं तो conspiracy में ला रहा हूँ ना, direction थी ना, तो direction. So would it be conspiracy? My respectful submission is no. This was not a conspiracy because he then thereafter, and if he see, नहीं, अगर हम इसका चीज ले लें as is, it's not actual conspiracy. The conspiracy was the earlier conspiracy. मैं कहता हूँ इसी को So blame ना. conspiracy on a conspiracy. No, This no. is a very, देखिए, this is a very strange conspiracy where instructions to murder have been given to an officer, and then the conspiracy is diluted by informing another person that I have so conspired. So it's a conspiracy on a conspiracy. नहीं सर नहीं, ऐसे This नहीं. is, in this way, the whole world will get to know of it. नहीं सर ऐसे नहीं. कंस्पिरेसी के अगर आप अगले सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें यह है कि किसी स्टेज पे भी अगर उसमें आप शामिल हो गए तो आप सबके एक्ट के जिम्मेदार होंगे. वो मैं पढ़ नहीं रहा, कोई टाइम बचा रहा हूँ आपका. नहीं, वो पढ़े ना, कहाँ लिखा है? सर वो ऐसे ही है सारे. आप 120 से आगे आप चलते जाएं तो यही लिखा कि फिर उसके बाद जो ज्वाइन करेंगे 115 सेक्शन पढ़ ले, ये लंबा हो जाएगा. आप वो अबैटमेंट के सारे सेक्शन पढ़ लीजिएगा. Conspiracy is form of abatement.
अबेटमेंट की डेफिनेशन में कंस्पिरेसी भी आती है और Let's read it. I think we should. साहब मैं तो आई वुड लव Because it's troubling me, that's why. नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो डर रहा हूँ ना जी आपसे। उस दिन का मैं मुंतजर हूँ। जी नहीं सर नहीं मेरा ये है ना 120 तो पढ़ लेना जी कंस्पिरेसी। अब इसकी सजा जो होती है कंस्पिरेसी में वो 109 में होती है, ये अबेटमेंट कंसिडर किया जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक 120 अगर आप पढ़ें A, definition of criminal conspiracy when two or more persons agree to do or cause to be done, agree to an illegal act. So I'm saying that has already happened, that conspiracy. सर मैं This is a second conspiracy. What is it about? उसमें नए बंदे को ऐड किया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। मैं फेयर असिस्टेंट, मैं आपकी बात मेरे जो कंटेंशन है उसकी सपोर्ट में जाती है, बट आई एम हियर टू असिस्ट योर लॉर्डशिप एज अमाइकस। आई डोंट रिप्रेजेंट एनी पार्टी। No, we know that. मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद अब आप इसका ये पढ़ लीजिए 120B पढ़ लीजिए पहले, ताकि बात क्लियर हो जाएगी। जी पढ़ें। Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upward shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he has abetted such offence. अबेटमेंट आ गई ना। अब इसीलिए फॉर द पर्पस ऑफ पनिशमेंट वी विल गो बैक टू अबेटमेंट। कंस्पिरेसी I beg to differ. I think the conspiracy definition is contained in 120A, and this is a punishment. It does not add to the thing, it just elaborates. It's not adding new definitions to conspiracy. 120 पर B पढ़ा है, बी में तो सजा है। तो मैं उसी को कह रहा हूँ ना, कंस्पिरेसी की सजा कहाँ मिलेगी कि उसको अगर उसकी कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है कि इसकी सजा क्या है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ यू हैव अबेटेड द क्राइम। आई हैव अंडरस्टूड दैट। यही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंस्पिरेसी। आई एम जस्ट सेइंग इफ वी टेक मिस्टर मसूद महमूद स्टेटमेंट इन इट्स एंटायरिटी एज ट्रू, यस, डज इट कॉन्स्टिट्यूट कंस्पिरेसी under 120A? That's all. वो यही है ना जी कि ये सब्सिक्वेंटली उसमें आप शामिल हो गए कंस्पिरेसी में किसी स्टेज पे किसी, ये तो बड़ा सेटल्ड लॉ है ना जी। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ। नहीं देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। 2 लोग कमरे में बैठे, तुम इसको कत्ल कर देना, सही है, बिल्कुल। या 3 लोग बैठे, बिल्कुल ठीक, ये हो गई कंस्पिरेसी। सही है, हो गई ना कंस्पिरेसी। सही है। अब एक माह बाद या चंद दिन बाद एक और मीटिंग होती है वन ऑफ द कंस्पिरेटर्स की किसी और के साथ। हाँ, मैं ये कंस्पिरेसी कर चुका हूँ सर, फिर भी वो दूसरी वो कंस्पिरेसी है ही नहीं। सर नहीं सर नहीं, आई बैक वो तो डिस्क्लोजर कर रहा है सर। आप मुझे मैं फिर इसमें टाइम बड़ा लग जाना है। मेरी बात को आप ये सुन के सच मान लीजिए कि ये ठीक है, बाद में आप इसको पढ़ लीजिए। मल्टीपल कंस्पिरेसी हो सर, गया। मल्टीपल नहीं है, दिस इज नॉट। आप ये कह रहे हैं कि कंस्पिरेसी एक होती है, उसमें कंस्पिरेटर्स जो हैं वो ऐड होते हैं। क्या बात है, तो वेरी गुड। आप ये कह रहे हैं माशाल्लाह, मैं नहीं कह रहा, लॉ कह रहा है। जो इलीगल एक्ट है वो एक हुआ, उसमें लोग ज्यादा आते जाएंगे। जैसे मैं आपका नाम मैं नहीं लेता, मैं अटॉर्नी जनरल के साथ कोई कंस्पिरेसी करता हूँ, इज कैपेबल ऑफ डूइंग। एग्रीमेंट है, मैं उसके बाद ये जाके लाहौर में किसी और बंदे को ऐड कर लेते हैं, मुझे नहीं पता कि इन्होंने ऐड किया उसको, वो भी शामिल हो जाएगा। देखिए मंजूर मलिक साहब, फिर बात फर्क हो जाएगी। फिर होगी कि मैंने उसको कहा था, वो तो बेकार निकला, उसने काम नहीं किया, अब तुम करो ये। सर ये बात, ये हो गई फ्रेश कंस्पिरेसी। मगर ये बात भी नहीं कर रहा है, तो ये मुझे कंस्पिरेसी तो जरा मुश्किल लग रही है कंस्पिरेसी। फिर इसको ऐसे करते हैं, मैं दूसरी बातें खत्म कर लेता हूँ इसको, फिर कल पूरा केस लॉ मैं आपको लाकर दे दूंगा। केस लॉ दिखाइएगा, इस पे केस लॉ है। आपकी बात सही सर, ये
इस पे case law। इसमें अभी सारा कुछ है कंस्पिरेसी में जो आपने ऑब्जर्वेशन दी है, ये जो जजमेंट आप पढ़ेंगे ना उसमें भी जजमेंट हैं। मुझे फिर बार बार आप Before I read a judgment, I like to read the plain language of the provision. प्लेन लैंग्वेज Plain language of the provision does not seem to suggest that subsequent disclosure of a conspiracy or subsequent calling upon someone else to please fulfill the conspiracy that I entered into earlier. 100% जो मैं बात कर रहा हूँ that is in accordance with law. I am saying with full confidence. मैं और आप एक conspiracy करते हैं, मैं लाहौर में जाके तीसरे बंदे को शामिल करता हूँ, इवन विदाउट योर नॉलेज वो तीसरा बंदा भी शामिल होगा और आप भी उसके एक्ट के जिम्मेदार होंगे। यानी उस जुर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये जा रहा है कि 120A में ऐसा नहीं लिखा सर हुआ। बिल्कुल It may be interpreted somewhere नहीं, else, ये सर लेकिन ये बिल्कुल interpret सही हुआ। कह रहे हैं। इसी तरह देखे ना, आप इस केस को ही लीजिए, आप इस केस को लीजिए, कंस्पिरेसी की आप मान जाएं कि मसूद महमूद के साथ भुट्टो साहब की कंस्पिरेसी है, तो भुट्टो साहब ने मौके वाले बंदे को तो नहीं कहा कि मार दो ना, वो कंस्पिरेसी में शामिल थे। यानी वो आगे जब ये एग्जीक्यूट करने जाएंगे हो सकता है उस नहीं, शख्स ठीक को है, मजीद लोगों ओके की फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया सर? ये कंस्पिरेसी का I will put it this way, you have not been able to persuade me, but आगे बढ़ते हैं। मैं क्लियर है सर जी। ऐसे ही है, मुझे फिर आप टाइम केस लॉ में दे दीजिएगा बाद नहीं, में। केस लॉ इस पे तो केस लॉ की जरूरत ही नहीं है। बहरहाल ये पे छोड़ दें, आप इसको इस तरह चलिए हम समझ इसको लें। साइड पे रखते हैं। अभी आप इसको टेस्ट पे ही रहें कि मसूद महमूद को आप क्या समझ रहे ठीक। हैं, आप उस पे रहिए ना। अगर आप Got it. अगर उसको मानेंगे नहीं तो आपकी डेफिनेशन जाए वो रेलेवेंट ही नहीं रहेगी, मेरी बात रेलेवेंट ही नहीं, आप उसको ऐसे ले लीजिए, ना मानिए मेरी बात। अब मैं अगली बात, मैंने ये कहा कि अगर ये आप वाली बात माने फिर देन इट इज नॉट ए कंस्पिरेसी, ठीक है। अगर मेरी बात माने तो मेरी बात मानने के बावजूद भी इट डज नॉट कम विद इन दैट डेफिनेशन बिकॉज देयर वाज नो एग्रीमेंट। मसूद महमूद का भुट्टो साहब से कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं बिकॉज ही डिड नॉट एग्री टू दैट। देखिए फर्क ये, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, मैं एक तरफ स्ट्रेस कर रहा हूँ, आप दूसरी तरफ स्ट्रेस कर रहे हैं। मैं सरेंडर कर जाता हूँ आपकी बात। नहीं चले आगे बढ़ते हैं। मैं छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं। नहीं वी गो ऑन, चलें। कोई नो इशू। अब इस बात को आप रजिस्टर कर लें, ये कंटेंशन को कि ये कंस्पिरेसी बनती ही नहीं है 120A के तहत। चलें इसको यहाँ ले लें, छोड़ दें, अगली बातें छोड़ दें। अब नेक्स्ट पॉइंट, मान लें, आप प्रेज्यूम कर लें कि ये बात उसने सच कही है। अब इसको आगे लेके चलें। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये चीज नोट कीजिए, he said I was reminded several times by Zulifqar Ali Bhutto and goaded by Saeed Ahmed and Mr. Bajwa. इसके बावजूद he has not, this is very important, he has not said a single word कि I ever contacted मियां मोहम्मद अब्बास। ये आप प्रोबेबिलिटी के टेस्ट पे आ जाइए कि आप एक बंदे को शामिल करते हैं, उसको टास्क देते हैं, वो बंदा कहता है जी कि मुझे इन्होंने 10 दफा रिमाइंड नहीं कराया, कितनी दफा रिमाइंड कराया, एंड आई वाज रिमाइंडेड बाय अदर पर्सन एज वेल। तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आप दूसरे को जाके कहेंगे तो सही ना। आपने पूरा चीफ पढ़ा, उसने एक जगह भी कहा कि मैंने दोबारा उससे पूछा कभी क्या किया है, उसने कि ये बात की नहीं ना। तो ये सेकंड बात है कि इस वजह से भी आप उसकी बात को नहीं मानेंगे कि ये बात प्रोबेबल नहीं लगती। और अगली बात अब ये है कि इफ मियां अब्बास is already on a task which has been assigned to him by is Director General of that time on the conspiracy of Zulifqar Ali Bhutto. So why he will be involved? What for? So had it been the situation that Mia Abbas was in the loop, he knew the task, this is their case, so why directly not talk to Mia Abbas?
If ID wants to get something wrong done through a SHO or a police inspector, why he will call to DIG? Because this is not a legal act. This is illegal act. He will talk directly to that man. As if Lordship want to do a civil judge to do something. जी क्या ये बताएं this is exactly what I'm saying. ये मैं आपसे सरेंडर कर गया वो मानिए जोड़ दे तो ये बताएं ये जो आप अग्रीमेंट की बात वो पंजाबी में एक कहावत है जी कि तगड़े दा 70 20 100 मैं तो मान गया हूँ आपकी बात ये आप जो बात कर रहे समझ हैं नहीं अब बाद में बताऊंगा आप बात करें एग्रीमेंट की सपोज करें आपकी बात हम लेते हैं उन्होंने एग्री नहीं किया लेकिन उनके एक्शंस ये दिखा रहे हैं तो उसके बारे में आप ये तो मैं बता रहा हूँ ना आपने बिल्कुल सही बात की पहली बात ये है कि मैं कहता हूँ कि एग्रीमेंट नहीं है ठीक है इनको भी नहीं पता जी मुझे ही पता उसका मतलब ये इनको नहीं पता ये पोठोहार की मिसाल नहीं है आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी पहली मेरी आर्गुमेंट है कि ये कंस्पिरेसी है ही नहीं ठीक आप कहते हैं नहीं जी आप इसको माने कंस्पिरेसी जी तो फिर नेचुरली उसके कॉन्डक्ट को देखेंगे ना हम जी तो उसने क्या किया मेरी बात प्राइम मिनिस्टर की बात सुन के व्हाट ही डिड अभी मैं चीफ पे हूँ जी जी क्या कि उसने कहा कि आई रिपीटेड दीज वर्ड्स इन ए परप्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड बिफोर गुलाम अब्बास दैट्स ऑल व्हाट एल्स नथिंग वुड इट बी प्रोबेबल a task has been assigned by the Prime Minister and that too Bhutto, who as per their case will not tolerate any nonsense. So क्या prudent man क्या कहेगा ये मान लेगा कि आप 4 महीने फिर खामोश ही रहे you never said in your chief कि I then asked so and so be on the task ये मैं बात कर रहा हूँ और दूसरी I hope I am clear now thank you. Now I'm coming to the point that if Ghulam Abbas was already on the task, this is their case. So why Prime Minister will ask this man? Why? Why not directly to that person? And why the Prime Minister will send Sayyid Ahmad Khan and Bajwa to this man? Why those were not sent to Mian Muhammad Abbas? Mian Abbas was in Pakistan. He was at Islamabad in the same office. So that makes it highly improbable. No prudent man will believe this story. This doesn't fit in the circumstances of the case. And secondly, next point is, this is his claim that at page 75, volume 2, is a part of his examination in chief, that when after Lahore's incident, he was called by the Prime Minister. And Prime Minister said, you have not achieved the task. And you must do it. You are responsible. Now kindly see what he says. I will read from my notes. I will not go to the book. इस पेज पे जी वो सर ये पेज है 75 है वॉल्यूम 2 पेज 75 वॉल्यूम 2 ये अगर जनाब आप पढ़ लें इसको ये अब ये चीफ से मैं पढ़ रहा हूँ आई हैव नॉट टच क्रॉस एग्जामिनेशन I was summoned, second line sir, I was summoned by Mr. Bhutto on our return from Rawalpindi. He was peeved and agitated. He said that the actual task has yet to be accomplished. अब उनका जवाब शुरू हो जाता है. I said to him, at your behest, an idea conceived by you was carried out and communicated by me to Mian Abbas, who has already your direction through my predecessor. अपने आप को भी निकाल रहा है ना? And the fact remains that both you and I and my subordinate will be taken to the task by God Almighty, but I will not carry out any such order anymore. Ab, can a Director General
who first, it is on your assumption that there was a conspiracy. Can he say so to the Prime Minister? It's so many words. And then the next part, he claims that I have very good relations with the family. I met the deceased several times. We are from the same town. So does it appeal to the common sense? Would a prudent man will believe this story? Could it be happen? And more particularly, this is the most important point. After these utterances, your Lordship remain, many of you remain the Chief Justices. Your Lordship, did any registrar of this court can dare to say such thing to the Chief Justice? And that is the Prime Minister. And next submission. If it was so, if we believe he said so, so what was the natural consequence? I don't agree with you there. I encourage the registrar to oppose me on anything. सर मैंने आपका तो नाम ही नहीं लिया। नहीं मैंने आपका नहीं, मैंने जहाँ जो रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के रहे हैं हम दूसरी तरफ बात की है। आप अपने तरफ ना लेके जाना। All of you. नहीं सर वो थोड़ा थोड़ा बात निकल जाती है, कोई बात नहीं, but आप you have every right to disagree. मैन लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जी प्रूडेंट मैन है वो, खवातीन का भी इस्तेमाल कर लें उनके लिए। खवातीन का वो भी तो खवातीन तो सबसे ज्यादा प्रूडेंट होती हैं। खवातीन से तो प्रूडेंट होता ही कोई नहीं है। नहीं वो कह रही है कि आप प्रूडेंट पर्सन कहें ना। अच्छा सॉरी आई एम रियली सॉरी। लॉ में लिखा हुआ है। क्या प्रूडेंट मैन ही लिखा है ना? हाँ वो ऑल जेंडर स्पेसिफिक वुड बी रेड एज नहीं मगर आप अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस से जाएं पाकिस्तानी कल्चर में तो औरतों तो ज्यादा प्रूडेंट होता ही कोई नहीं। खामद को मैनेज करना, ससुराल को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, सोसाइटी से डील करना, मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा होती औरत प्रूडेंट है। मलिक साहब ये टीवी पे चल रहा है, वो घर वाले सुन रहे होंगे, छोड़ें आगे चलें। नहीं उनकी ऑब्जर्वेशन ठीक थी। क्या अब सवाल ये है कि अगर ये बात वाकईतन he uttered these words to the Prime Minister, just so many words, so what would have been the reaction of Prime Minister? Immediately minimum was that he must have been transferred. यही होगा ना कि अब आप तो इस काबिल नहीं है, चले सैक नहीं करते, ट्रांसफर ही कर दें। He remained DG for 2.5 years. Kindly see. कब तक? मुझे 77 तक, जब 5 जुलाई 77 तक he was DG FSF. 2 years thereafter. Would it be probable? Would any prudent man would believe this? How it is possible? So this was his examination in chief. His story is not. What happened to him thereafter? वो तो पकड़ा गया ना जी, जब वो 5 जुलाई को मार्शल लग गया, फिर पकड़ा गया। और फिर क्या हुआ? Is he alive? पता नहीं जी, मैं तो पर्सनली नहीं जानता, चौधरी साहब को पता होगा। I don't know. मसूद महमूद जिंदा है, ये कह रहे हैं फौत हो गए। He's died. Thank you, sir. Where he went to America? Taken? There was nothing. Witness protection तो होता है when you don't know the identity. अच्छा, पाकिस्तान में तो ऐसी चीज नहीं है कोई। उस वक्त तो लॉ नहीं था विटनेस प्रोटेक्शन का। हाँ? और सर ये अब बात मतलब अमेरिका चला गया जी, खुद चला गया या किसी ने भेज दिया, ये तो अब इस पे बहस पे पड़ेंगे, फिर मेरा टाइम बढ़ जाएगा। वो चला गया अमेरिका और मर गया, एंड ऑफ द मैटर। Because मैं जब सवाल पूछूंगा it will be relevant. सर मैं अभी when you give me permission. नहीं, I don't use sir please that words. I'm using that word. No sir, नहीं permission नहीं है, मैं तो आप खत्म कर लें फिर मैं सर मैं खत्म के बाद बीच में वो उसका कैलिफोर्निया आ गया। अब मैं ये बात कर रहा था कि ये स्टोरी अब उसका एग्जामिनेशन इन चीफ सामने रख के I have given 4-5 reasons. Now it is for your lordship to apply the test of prudent man, which includes women as well. डिक्शनरी सही होनी चाहिए।
डिक्शनरी को सही कर रहे हैं। चलें वो बाद में कर लेंगे जी, अभी इसको करते I हैं। think what the point you're making is not the test of prudent man, because if that we are doing, then we are substituting ourselves with the trial court. What probably we want to say that even an imprudent man would not do this. So that will shake our नहीं conscience. वो फिर सारा केस ही खराब हो जाएगा। इनप्रूडेंट मैन और तो भी फिर ज्यादा है। नहीं नहीं वो तो इनप्रूडेंट मैन वो दूसरी बात मान लेगा, वो वो मैं नहीं मानेगा अभी ऐसी नहीं बात। बहरहाल वो अच्छा जिसको फिर करेंगे। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते अब हैं। बात करें। Now I will touch some part of his cross examination. I have promised that I will conclude by 1:30. Yeah, yeah. Cross examination. It starts at page 82. पहला बताना। अब आप मैंने ये बता दिया कि ये रहा Can you डायरेक्टर। remind us what volume? वॉल्यूम इसका वही 2 है जी, 2 है कि 4 है? 2 वॉल्यूम 2 सर। 95 शुरू होती है उधर से। 82 से शुरू होता है इसका 64 से स्टेटमेंट शुरू है PW2। जी सर जी। अब पेज 95 पे आ जाइए। 95। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब को, अब ये चीज इस सारे क्रॉस एग्जामिनेशन में ये पॉइंट ज़हन में रखिए कि ही नॉट ओनली सेड नो टू द प्राइम मिनिस्टर बट इन वेरी हार्श वर्ड ये उसने कहा। अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये आई एम एट पेज 95 सर, इन द मिडल जहाँ पे ये स्टैंप लगी हुई है ना टेस्टेड की, इसके आगे जरा देखिए। My first visit to the 4 countries was in the end of January 1975, but it is subject to verification, while the second was in November 76 till the beginning of December 76. अब कैसी बात है, ये फॉरेन टूर भी कर रहा है। ये पहली चीज नोट करें इसका। उसके बाद अगर पेज बोल 101 अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माय लॉर्ड जस्टिस। यस, ये जो आपका क्वेश्चन था सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट, उसके लिए ये बड़ा जरूरी है, प्लीज इसको देखिएगा। ये है पेज 101 पे, सेंटर पे सर स्टार्ट हो रहा है आई डिड नॉट। पढ़ूं सर? मिल गया सर जी। 101 के सेंटर में ये पहला स्टार्ट हो रहा है आई डिड नॉट गिव। जी एनी प्लान टू, I did not give any plan of mine to Mia Muhammad Abbas for committing the murder of Ahmed Raza Kasuri, since Mr. Abbas has assured me about the execution of the order given to him by the then Prime Minister. Therefore, I did not give any persons to him for the execution of those orders. Question: did you tell Mia Abbas how and from where he had to arrange the arms and ammunition, if any at all, to be used for killing Kasuri? I did not. So this is a subsequent conflict. So kindly see this answer in the context of the statement of the witness that he was reminded by the Prime Minister, he was goaded by Mr. Saeed Ahmed Khan and Mr. Bajwa. अब उसके बाद वो कहता कि मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा, मैसेज दे दिया अल्लाह खैर सल्ला, वो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। नेक्स्ट पेज 109। Next, Can you read the question on this page? The last question. इसके बाद वाला Same page 101. Last question. When you made a confessional statement in this case on 14th of August 7, did you know that the attack at the life of Kasuri at Islamabad was a part of the conspiracy? I had the hunch but it was so. Where is the statement of 24th August 1977? ये रिकॉर्ड पे ही है जी। हाँ? ये रिकॉर्ड पे है, अभी मार्क करके आपको दे देंगे, चार्ट में बता देंगे सारी उसकी। अगर कोई बता सकता है पेज, अभी बता दो, पेज बता दो। वॉल्यूम 4
Page 687. Volume 4, page 687. ये मैंने कहा था पेज 687। मतलब साहब ये अप्रूवर की स्टेटमेंट जो लगा मुझे लिखी है उसके अलावा है। हाँ लगा है ना जी, 2 स्टेटमेंट थी ना जी। एक इसकी स्टेटमेंट हुई कन्फेशनल स्टेटमेंट एट इस्लामाबाद एज एन एक्यूज। अब देखा ना, जब फर्स्ट चालान आया इनकम्प्लीट चालान, उसमें ही वाज accused. So that was on the basis of his first statement. पहली क्लू इस्लामाबाद में हुई है। ये 687 पे मुझे नहीं मिला। ये स्टेटमेंट हुई है 24/8। ये तो जरा दोबारा बताएं। 687 ही है ना ये स्टेटमेंट। ये तो कोई कंटिन्यूएशन है। जी जी, क्या सर? 687 is a continuation of something. तो सर नहीं, ये वॉल्यूम 684 से शुरू हो रही है। ये तो अब्दुल खालिक का है। नहीं सर नहीं, वॉल्यूम कौन सा देख रहे हैं? 4 और आप तक ये डेट आप लिख लें 24/8/1977। ये स्टेटमेंट बताइए। इस्लामाबाद, ये पेज है 6। ये कौन सा वो दूना बेटा? 6 आप कह रहे हैं 4 क्या है? 687 क्या है? नहीं, ये तो कुछ और चीज है। किसमें? कौन से वॉल्यूम में? अब खोल देना, मैं बताता हूँ। आप पेज भी देख लें उसका। वॉल्यूम 8 में वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट की तो वॉल्यूम तो ये। एक सेकंड सर, ये देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ओके। ये बच्चे थोड़ा सा आपकी वजह से घबरा जाते हैं। 24 अगस्त 1977 का स्टेटमेंट चाहिए महमूद मसूद का। सर आपको मिल गया, वॉल्यूम 8 है, पेज 135 है। यही है वॉल्यूम 8। ये बेटर कॉपी उसकी मिल जाएगी। 135 सर। कहा था आवाज को छोड़ो ना, क्या करते हो? ये सर, ये इसका सारा चार्ट बना के ना जी आपको दे दिया जाएगा सारा। बट ये बता दो। ठीक है ठीक है जी। 164 की स्टेट ये वही है जी, ये पहली स्टेट। सर अब प्रॉब्लम पता क्या है, इतना स्कैटर्ड रिकॉर्ड है कि सारी देखने पड़ते हैं। ठीक है, अप्रिशिएटेड। और ये बेचारे ये सारा क्रेडिट इन ये 3 बंदे जो खड़े हैं इनको जाता है। 141 पे डेट है इसकी। हाँ। 24/7 वही है ये। तो ये तो बेसिकली ये स्टेटमेंट। सर अब आगे चलो सर, प्लीज। अब 109 पे सर, 109 है। अब सर, अब ये मेरा ख्याल वो वेल्च को तो मैंने टच नहीं किया था, बट बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जो जिसमें वो जनाब का नॉलेज बड़ा रेलेवेंट है। ये क्लेम करता है कि 74 में इसने वेल्च को फ़ोन किया और बताया कि जी टेलीफोन पे कि भी आप ये उसकी टेक केयर करें। अब उस वक्त 74 में कोयटा के लिए एसटीडी फैसिलिटी नहीं थी, वो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, आपको ऑपरेटर के जरिए बात करनी पड़ती थी। तो ये इस चीज़ को साबित कर रही है कि ये बात के भी आपने, ये कहते हैं ना कोयटे में बात की, Mr. Welch has a general telephone at his office and another at his house. Question: in August 74, Quetta was not served by STD. Answer: I don't remember. अब ये तो the court can take a judicial notice of this कि उस जमाने में ये थी नहीं। नेक्स्ट पेज। मिस्टर वेल्च की क्या रेलेवेंस? तो वो जनाब उन्होंने कहा कि वो कोयटा में जब ये गया तो उसको कहा गया कि इसकी केयर करो, टेक केयर ऑफ हिम। और टेक केयर ऑफ से मतलब जैसे कहा इसको फारग करे, कोई अल्लाह करे। तो वो फिर उसने कहा जी हमने वहाँ कुछ किया ही नहीं, कुछ ऐसी बात हुई नहीं, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया था उस पार्ट को। अब ये पेज है 118। अब ये सर यहाँ से शुरू हो रहा है 118 से लेके 127 तक। ये सारी कन्फ्रंटेशन है
अगर जनाब हुक्म करेंगे मैं पढ़ दूंगा कि जो जो बातें इसने की अपने स्टेटमेंट में, इसको पूछा गया कि तुमने अपनी प्रीवियस स्टेटमेंट में ये कहा था, इसने कहा नहीं कहा था क्योंकि मुझे पूछा ही नहीं गया था. सो दिस वाज. अब ये अगर चाहते हैं तो मैं इसको एक दो को पढ़ दूं. है ना? नहीं, जरूरत नहीं है. चलिए ठीक. 130. अब 130 पे आ जाए. ये 32 है बेटा, क्या हो गया है सर. 130 पे सर लास्ट क्वेश्चन, पेज 130, लास्ट क्वेश्चन. ये लिखे गए क्वेश्चन. सर प्रॉब्लम वहाँ ये हो रहा है, जो पढ़ के मैंने इंप्रेशन बनाया कि उनकी बात लिखी नहीं जाती थी, हालांकि क्वेश्चन नहीं लिखे जाते, सिर्फ उसको लिखा जाता है इस फॉर्म में, मगर वो फिर उन्होंने क्वेश्चन बाकायदा लिखे. अब ये क्वेश्चन है, is it correct that on this tour you requested for leave ex-Pakistan for your medical checkup and treatment? Yes, but I invite the attention of your lordship to as observation made before this honorable court by Mr. Bhutto a few days ago that I had collapsed in ziyarat and that he sent me for treatment abroad. अब ये बंदे के ट्रीटमेंट के लिए उसको अब्रॉड भेजा जा रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है नो. Basically he's saying he's not part of 2 साल. ये So basically he's not part of the conspiracy. वो कॉन्स्पिरेसी बनती ही नहीं है ना. इसकी स्टेटमेंट, इसका कॉन्टेक्ट आप देख रहे हैं ना. ये तो मेरे जैसा आम आदमी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रूडेंट मैन, वो भी नहीं मानेगा. ये बात प्रोबेबल है ही नहीं, किसी एंगल से प्रोबेबल नहीं है कि ये बंदे को शामिल कर. और फिर अभी मैं लास्ट में वो जो गुलाम अब्बास का इन्होंने बयान उसको फारग किया कोर्ट ने कि नहीं जी हम नहीं मानते, उसको आप सामने रखेंगे तो फिर बिल्कुल ही बात नहीं बने. इससे आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बात इससे आगे आ रही है जनाब. मुझे आई एम कॉन्शियस एट 130, मैं क्लोज कर दूं. अब ये पेज 132 है. 132 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. It starts with the sentence, I do not remember the exact date. I do not, last sir शुरू से page 132. जी ठीक है नीचे. I do not remember the exact date when I reached London after staying in Belgium and West Germany for a couple of days or so. Such each I reached London. अब ये अगला जनाब ये एक नोट है. Learned Counsel submits that this question and those that follow pertains to the second visit. Answer, yes. I stayed in Hotel Intercontinental London as the embassy made arrangement for my stay there. अब मैं तो कभी ठहरा नहीं जी इंटरकॉन्टिनेंटल लंदन. पर आपने ऐसे काम भी नहीं किए. नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए कॉन्टेक्स्ट देखिए. We've got the point. आप आगे और भी मजेदार है. नहीं इसे पढ़ा ही पूरा. I stayed in the Hotel Intercontinental. Yes, I stayed in as the embassy made arrangement. During this second trip, my wife was accompanied me as an official attendant, as I was likely to be operated upon in case doctors so decide. It is incorrect that I have obtained a special sanction for $500 British pound and $1 for my wife her trip. In fact, a sanction was obtained for $500 only. I made no request for permission for the release of $1,500 or pound to me for my intended visit to America. It is incorrect that my wife and I stay for 3 weeks in London. वो जो spectacles की बात है, exact period. आगे एक बस ये लास्ट है. अब एक सेकंड लास्ट है सर. ये पेज 133 in the center. I did purchase in London spectacles fitted with a hearing aid, and the price for that 2 pairs was about £400.
The total expense incurred on my wife and myself during second trip must have been rupees 50,000. The question as to who was responsible for the payment of price of the spectacles was still under examination when I was taken into custody. अब ये इतने नखरे बर्दाश्त किए जा रहे हैं इस बंदे के, अब इसको अब ये भी बात लगती है कि hearing aid we never heard anything before. अगर उसकी hearing aid का प्रॉब्लम है तो उसने नहीं पता नहीं अपने लिए खरीदे के बेगम के लिए खरीदे। ये भी तो हो सकता है कि उसको विन ओवर करने के लिए इतने नखरे बर्दाश्त करें उसके। विन ओवर किसने करना था? प्राइम मिनिस्टर ने। क्यों? ताकि उससे काम लिया जाए। तो काम तो हो गया, ये तो अब उसने तो इतना बड़ा कह दिया कि जी मैंने करना ही नहीं। चलें अब आगे लास्ट है पेज 134, ये सारे 134 सर। ये क्वेश्चन है सर, इज इट इफेक्ट दैट ऑन अकाउंट ऑफ सच थ्रेट, ये अब ये कह रहा है कि मुझे थ्रेट मिल रहे थे, और ये मैं वाजे कर दूं कि वो जो थ्रेट की सारी कन्फ्रंटेशन जो मैंने आपको पेजेस लिखवाए उसमें है। अब उसका जवाब सुनिए, इज इट इफेक्ट दैट ऑन अकाउंट ऑफ सच थ्रेट्स यू फेल्ट योरसेल्फ इनसिक्योर? आंसर, I am not too sure about that, as I am not too sure of that, as my faith in God is unflinching. अब ये अनफ्लिंचिंग फेथ का क्लेम करना बहुत बड़ी बात, बहुत फेथ तो सबका ही है, मगर वो बंदा ये बड़ी बड़ी ऊंची बात है ना जी कि मैं तो 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता, तो क्या ऐसा बंदा कंस्पिरेसी में आएगा जिस पे अल्लाह का फेथ? अब इसको उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे अनफ्लिंचिंग को, हाँ गैर मुतजलजल, यस वेरी गुड थैंक यू, गैर मुतजलजल कि वो जो इधर उधर नहीं होता, फिक्स। इस फेथ बड़ी कैटेगरी है, ये क्लेम तो बहुत बड़े बड़े लोगों का हो सकता है जो अल्लाह के खास बंदे। अब वो ये कह रहा है, अब इसको आप उस एविडेंस से मिलाएं, तो सर माई सबमिशन वुड बी that this statement is not even worth consideration, not worth consideration for a variety of reasons. So sir, at the end I will just refer to an application, I will not read that. It was drafted by, I believe it was drafted by Mr. Bhutto himself. He himself drafted this application. इसका end दिखाना जरा, इसका end दिखाओ, एंड से साइन कहाँ है उसके, फिर क्या करते, बिकॉज इट इज नॉट, मैं जनाब कहाँ से शुरू हो रही हूँ, वॉल्यूम है 8 पेज 1 और ये एंड हो रही है पेज 60 पे। मैं चाहूंगा कि आप पेज 60 जरा देखिए, पेज 60 पेज 1 खत्म हो रही है 60 सर जी। ये आप देखेंगे कि ये किसी काउंसिल के लिए नहीं है, ये भुट्टो साहब ने खुद डिक्टेट करवाई है और उनके इस दस्तखत हैं यहाँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बेहतरीन इंग्लिश और ऐसा बेहतरीन कंटेंट्स नहीं पढ़ा कभी, इतनी और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे पढ़ लें इसको, इसका बाकी बातें रेलेवेंट नहीं है, वो आप माने ना माने इसको पढ़ें जरूर। इतनी खूबसूरत, इतनी सिंपल इंग्लिश कि जो मेरे जैसे बंदे हैं जिनका इंग्लिश प्रॉब्लम है वो भी बड़ी आसानी से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, वेरी वेल ड्राफ्टेड। अब इस पे एंड पे उन्होंने एक लिखा, वो बताओ, ये पैरा 31 में उन्होंने लिखा, क्या है, हाँ हाँ वो बताओ ना, ट्रायल ऑफ मर्डर क्या है। और एक एप्लीकेशन उन्होंने गवर्नर को लिखी, वो पेज 83 पे है। इसमें क्या हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली, क्या इस एप्लीकेशन में कौन सा स्पेसिफिक क्लॉज तो पढ़ना? उन्होंने ये किया, व्हाट इज दिस एप्लीकेशन अबाउट, सारी बैकग्राउंड दी कि ये क्यों, मैंने ये मेरे साथ ज्यादती हुई, ये हुई, और इसको जब खारिज किया गया थ्रू ए डिटेल्ड ऑर्डर, तो ट्रांसफर एप्लीकेशन, ट्रांसफर तो इसकी एक वजह है ना जी। फिर उसके बाद मैंने इसलिए टाइम बचाया, फिर वो बाइकआउट हो गया, वो बाइकआउट कर दिया, मगर मैं सिर्फ कहता हूँ ये पढ़ने वाली है, वैसे भी पढ़ने वाली है, सारी स्टोरी बड़ी, आप इसको बुक की तरह पढ़ें। आप ये मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं फिल्म
फिल्म देख रहा हूँ। ये मेनली फेयर ट्रायल के बारे में बात कर रहे हैं। वही बिल्कुल वही बड़ी बातें हैं इसमें, बड़ा लंबा टाइम चाहिए। अब मैं सिर्फ एक बात करूंगा, ये पेज 82 में देखिए, इसी में अगला इसी वॉल्यूम यही है, इसका पेज 82 देखें जरा। ये अनदर एप्लीकेशन व्हिच वाज सबमिटेड टू द गवर्नर ऑफ दैट टाइम। पैराग्राफ 13 की लास्ट लाइन 77 से शुरू हो रही है। जी सर, 82 पे जनाब आ जाए। ये क्या है, ये क्या है, इसकी बी लिखा है ना जी नीचे, 13 के बाद बी आता है, रोमन कौन सा? ए लिखा है, ए लास्ट बी से ऊपर आता है, that the trial was illegal. It start with, मिल गया सर? That trial was illegal, that it stood vitiated, that it was not a trial of murder, but the murder of trial. तो मैं भी यही कहूँगा कि एंड पे कि जनाब ये आपके सामने सारी चीज़ आ गई। अब ये बात कि जी ये पुराना केस है, इसको क्यों खोला जा रहा है, ये भी एक ओपिनियन है, मगर क्या जो पुरानी चीज़ें हैं उनको करेक्ट नहीं करना कि हिस्ट्री को ऐसे ही रहने देना है। मुझे याद है कि जलियांवाला में 1917 में इंसिडेंट हुआ, बड़े इंडियन मर गए, जनरल डायर वाला वाकया बड़ा मशहूर है 100 में। तो कोई 80 इयर्स के बाद प्रिंस चार्ल्स आया इंडिया, ही वेंट देयर एट दैट प्लेस एंड ही अपोलोजाइज्ड टू द इंडियन पीपल। अपनी गलती को मान लिया उसने कि ये ज्यादती हुई। अब आपके पास ये आ गया, आपके पास 186 में आ गया, जैसे भी आ गया आपके पास आ गया, आपके पास मटेरियल आ गया। अब जनाब ने देखना है कि क्या इसको ऐसे ही रहने देना है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज कि क्योंकि वो स्कोप बड़ा कम है, या अपनी जो पावर, मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना एक्सपीरियंस नहीं है मगर आप तो सारे माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, आप 187 की जो आपकी पावर्स हैं टू डू कंप्लीट जस्टिस, तो क्या इस सारी जो चीज़ें हाईलाइट हो गई आपके सामने, उसके बाद क्या इस चीज़ को डिनाई कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकलिटीज? दिस इज ए क्वेश्चन फॉर योर लॉर्डशिप, और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये पॉलिटिकल, इस सारे मामले की पॉलिटिकल रिपरकशंस भी थी, मैं वो बात नहीं करूँगा, सिवाय इसके कि इंटीरियर सिंध के लोगों ने अभी तक इसको नहीं भूला, बस दैट्स ऑल। Now can I ask you a few You are welcome, sir. Please, can you have section 337 of the Criminal Procedure Code before you? Sir, उस जमाने का या आज का? नहीं, ये तो चेंज नहीं है, ये चेंज हो गया है ना जी, अप्रूवर वाला। हाँ वो चेंज हो गया, नंबर चेंज, और उसमें अब जो चेंज आ गई है ना, नहीं अब का नहीं, उसी वक्त का नहीं सर, नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ उस वक्त का। क्या सीआरपीसी की बात करें, सीआरपीसी, मैं भी सीआरपीसी अप्रूवर का जो है सर, वो उसमें ये चेंज हो गया कि अब जो कत्ल के केसेस हैं लीगल एज के बगैर नहीं बन सकता, वो वाला इज नॉट रेलेवेंट। तो आप पुराना उस वो पॉइंट ही नहीं है मेरा। अच्छा जनाब, आपने सामने रख लें, हुक्म करें सर, हुक्म करें। 337 आ गया जी, फरमाइए। ये आप इसके ऊपर ही देखेंगे ना? नहीं, अब जरा मेरा सवाल तो सुनिए सर, हुक्म करें। Masood Mahmood makes a confessional statement on 24th of August 1977. When is he given pardon and where is the order of pardon? बताओ भाई, ये confessional statement थी as an accused. I know. वो फिर दोबारा नहीं, वो बता रहा हूँ, मेरी बात सुन ले, मैं जवाब दूँ। ये confessional statement है at Islamabad as an accused. Thereafter, and that is why he was shown accused in the interim challan. Then his statement was recorded. 14th of September 1977. Where is that? At page. It's volume 8. Volume 8 में कहाँ पे है ये डेट है? ये कौन सी डेट है? 14/9 को? हाँ 14/9 को, पेज 183।
183 This was not referred to. 183. ये सब आई नहीं ना बात आपने पूछी 180. 183 पे वो एंड हो रहा है इसका जिसमें वो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है 183 Can you please read the magistrate's order? जी सर मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर आप पढ़ लेते हैं पढ़ लेंगे दे यार मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर मैंने तो फिर और ये शुरू कहाँ से हो रहा है 182 से 182 से जी ये सर अब मैं पढ़ूं सर या आप नहीं अगर आप पढ़ लें सबकी सर मैं तो या मैं पढ़ लेता हूँ आप ना 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 मैं तो इजाजत ली है कहाँ से पढ़ूं शुरू से आई डोंट नो जो भी रेलिवेंट है रेलिवेंट तो अब सर वो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा या अगर मेरे ख्याल में 182 भी पढ़ लें मैं यही कह रहा हूँ ना जी कि वो लास्ट आप देख आप पूरा पढ़ लें 2 ही पेज तो हैं सिर्फ मैं पढ़ लेता हूँ सर पढ़ लो मिस्टर मसूद महमूद एक्स डायरेक्टर जनरल FSF एक सेकंड सर स्टेटमेंट निकालो एन अंडर ट्रायल प्रिजनर निकालो an under trial prisoner confined in the camp jail Lahore had submitted an application on 7/9/1977 through the Superintendent District Jail Court Lakhpat Lahore where he was located at that time stating that he is involved in this case to the extent that he carried out the order of the former Prime Minister of Pakistan Mr. Z.A. Bhutto to cause the death of Mr. Ahmad Raza Kasuri in communicating the aforesaid direction to his subordinate Mian Muhammad Abbas, a director in the FSF, resulting in the murder of Nawab Muhammad Ahmad Khan, the father of Mr. Ahmad Raza Kasuri. He has further stated in his application that the commission of this heinous crime haunted his conscience ever since, and he is voluntarily prepared to become an approver in the case if granted pardon to enable him to place full facts before the court. He is also prepared to abide by all the condition of pardon. वो जो अगर वायलेट करे तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाए. The Deputy Director FIA, who is investigating the case, was asked to furnish his comments in the matter. His report has been received and examined. He has reported that there is no eyewitness in the case, and in the interest of justice and in order to see that actual culprits do not get unpunished, Mr. Masood Mahmood may be granted pardon and made an approver. Considering the circumstances of the case, Mr. Mahmood Masood had been summoned from the jail for recording a statement. In this respect, he is present in custody in the supervision of Shahid Anwar, Assistant Superintendent, Camp Jail, Lahore. His statement may be recorded. The provision of Section 337 of Code of Criminal Procedure have fully been explained to him. Statement of Masood Mahmood, age is so and so, so and so. The application Exhibit PA is in my handwritten and is signed by me. It is sent to the District Magistrate Lahore through Superintendent District Jail Court Lakhpat Lahore. I am at page 183. I know the facts which led to, and I am prepared to make full and true disclosure of the facts leading to the commission of murder of Muhammad Ahmad Khan, if I am granted pardon. It has been explained to me, and I have realized that this pardon is being granted to me on the condition of making full and true disclosure of all the circumstances within my knowledge relative to the offense and to every other person concerned with it, whether as principal or as an abettor in its commission, and feeling that I shall be liable to prosecution. I am making this statement voluntarily without any pressure from any quarter. Mr. Iqbal Nadeem, Additional District Magistrate Lahore. Considering आप आगे जो कहते हैं ये भी ऑर्डर पढ़ो. ये जरूर पढ़ें. ये भी पढ़ो. जी जी. Considering the circumstances of the above noted case, I am of the view that evidence of above mentioned Mr. Masood Mahmood accused is necessary to connect his co-accused with the case, as no ocular evidence is being made available, as Mr. Masood Mahmood has volunteered to
make a statement in respect of the occurrence in question, making a full and true disclosure of whole of the circumstances within his knowledge relative to the offences and to every other person concerned, whether a principal or a better. In the commission of the above-mentioned offence, I grant him pardon subject to the provisions of Section 337 CRPC, which have been fully explained to him. I am satisfied that he fully understand the said provision and have accepted the said conditions in his above noted statement. I hereby direct that the statement of Masood Mahmood may be recorded Mr. Zulifqar Ali Bhutto, MIC Lahore, today, strictly in accordance with the law. The said person is being sent to him in custody. Where is this statement recorded by Zulifqar Ali Bhutto? Page 235. Page 235, volume 8. Volume 8, देख लें. 235. 235. इससे पहले एक सेक्शन सर एक पेज देख रहे हैं मलिक साहब, इससे पहले एक पेज जरा आप क्या सर 181 पे आइए. उस पुराने वाले में नहीं, इसी वॉल्यूम 8. हाँ, जो पहले स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं ना, ये 14/9/77 का है. इस प्रोसीडिंग से पहले एक रिपोर्ट मांगते हैं वो FIA से, जी 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 और ये है 12/9/77 जी डिप्टी डायरेक्टर मजिस्ट्रेट को. जी 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 ये तरफ पैरा 2 181 पे पढ़िए. जी फरमाइए. पैरा 2 द ऑफिसर इज ओल्ड वन. नहीं, 181 ही है ना जी. जी. यही पैरा मिस्टर मसूद महमूद डायरेक्टर जनरल. ये मैं पढ़ देता हूँ सर. मिस्टर मसूद महमूद एक्स डायरेक्टर जनरल FSF, an accused person in the above case has confessed before the High Court that he got the murder committed under the explicit order. Confession 12 को वो लिख रहा है कि हाई कोर्ट के तो फिर पार्डन की प्रोसीडिंग शुरू की है. तो आप पता नहीं जी उसने ये बेसिकली कोई चलाना है तो नहीं सर नहीं, वो मैं इसमें थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये रिपोर्ट है जो डिप्टी डायरेक्टर है ना FIA, ये उसने उससे कमेंट मांगे, वो जो DC है, और उस कमेंट में उसने ये लिखा कि उसने ये कोई रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ नहीं है कमेंट्स लेना, मगर उसने त्यातन ले लिए. उसने लिखा कि इसने हाई कोर्ट में माना है, ये उसका वर्शन है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक. अच्छा, बयान है कहाँ? ये जो अप्रूवर वाला जो बयान है वो बता उसने लिख दिया ना कि अब ये 235 MIC दूसरा जो है उसको रेफर कर दिया कि ये इसका ये आ गया जी, आ गया. 235 वो कहाँ पे है सर 235 पे, वॉल्यूम 8 का 235. ये कैसी राइटिंग है? ये बड़ी माशाल्लाह सर, थोड़े गौर से पढ़ें तो बड़ी मजेदार है. ये बस ये 2 पेज का. हाँ तो इतना ही है. इसीलिए तो फिर जब कन्फ्रंटेशन हुई है ना, जो मैंने पढ़ा नहीं है आप नहीं, इसमें ये जो है स्टेटमेंट ऑफ मसूद महमूद. जी सर. अच्छा, अब एक चीज और मुझे दिखा दीजिए. सर हुक्म करें. गुजारिश कर सकते हैं. हाँ, ये जो इनका दरखास्त थी मसूद महमूद की, डेटेड 7/9/1977. वो देखो कहाँ. He had submitted an application on 7/9/1977. तो ये जरा हमारा रिकॉर्ड फिर तरतीब में हो जाएगा. ये सर अगर इजाजत दें तो ये बच्चे बाद में कर देंगे ये सारी मैं एक्सरसाइज. सिर्फ वो देख लूँ. वो इसमें अब वो ढूंढनी पड़ेगी, शायद इसमें या किसी दूसरे वालियों में घबरा जाते हैं. उसका जिक्र जो है पेज 1. वो है वो मगर पता नहीं 179 पे सर, जो पहले हम 179 पे 179 पे ऐसे क्या हो गया. I have the honor to forward you the application in original. Where, अच्छा, this is the application. नहीं, where is the application in original? वो रिकॉर्ड पे नहीं है जी. वो नहीं है हमारे, अभी हमें तो नहीं मिल रही, क्योंकि होती तो इधर ही होनी चाहिए थी, मगर वो नहीं है. मगर फिर भी वो मैं नोट कर लिया है. तो ये इंशाल्लाह ताला वो सारा जो भी आप इनको बताएंगे जो कागज चाहिए, ये उसको नोट करके फ्लैग लगा देंगे. ये इनकी मैं ड्यूटी लगाता हूँ, ये कल भी यहीं रहेंगे. आप इनको अपने स्टाफ के जरिए बता दीजिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए. मसूद महमूद का ये जो बयान लिखा गया है अप्रूवर के तौर पे, उसका बयान लिखा गया ऑन ओथ, इसमें भुट्टो का नाम है कहीं पे? इसमें कहीं जिक्र मुझे नजर नहीं आ रहा. ये एक सफे का बयान है, इसमें क्या है? जरा पढ़ दें अगर इसको जरा थोड़ा सा, क्योंकि असल बात यहाँ से शुरू हो रही है ना. ये सर ये बयान पढ़िए तो से कहाँ पे है इसका बयान? मुझे
ये लगता है कि ये बयान कंप्लीट नहीं है। यस, अभी मैं कहूँ कि इसमें वो किसी का नाम ही नहीं है और वो कंस्पिरेसी का जिक्र नहीं कर रहा। नहीं सर, वो बयान कंप्लीट है ही नहीं। असल में हुआ ये है ना जी, तो ये आप अब ये भी ड्यूटी लगा दें इनकी। ये कहाँ से लाए जनाब? ये अगर रिकॉर्ड आप में होगा तो ढूंढ लेंगे, ये हो सकता अब वही हमारे रिकॉर्ड में असल नाइक बिल्कुल साहब के पास होगा ना, वो अभी आएंगे ना, वो बताएंगे। अच्छा, अब मंजूर मलिक साहब चले, एक तो ये बात हो गई, ये नोट कर लें। एक आपको दरखास्त देना है, आप प्लीज नोट कर लें। और क्या दरखास्त देनी है हमने? नहीं, वो दरखास्त का जिक्र जो है मसूद महमूद की, वो नोट कर लो। 7 सितंबर ये कल 1977। इनको मैं कह रहा हूँ कि यही नहीं, अगर ये नोट कर लें, उसके बाद ये पूरा का बयान नेचुरली इनको रिकॉर्ड अवेलेबल जितना भी मांगे दे सकते हैं। सर एक सेकंड, अब एक सवाल आ रहा था, एक सेकंड पहले सर, वो ये ना बहुत घबरा जाते हैं जब आपका ऑर्डर आता है ना, तो ये इधर जाने के बजाय इधर भाग रहे हैं। आराम से पहले अगर इजाजत मेरे ख्याल में आपकी घबराहट है, मेरी तो नहीं है। एक बड़ा दरखास्त लिखे जो उन्होंने दी है कि मुझे पार्डन दी जाए, ये देखें सरदार साहब, कॉपी। और सेकेंडली जो उसका बयान लिखा गया एज ए पार्डन, उस मजिस्ट्रेट ने लिखा, MIC ने, उसकी पूरी तफसील लिख के दो। वो सारा जी नोट हो गया सर। अब मेरा आपने सवाल ही बोलो, अब मैं आपसे सवाल एक पूछ रहा हूँ। पूछे। Masood Mahmood, this is without any disrespect to anyone in the courtroom. Masood Mahmood hails from the same area as Qasur. Coincidental, has good friendship. Either the person instructing him to assassinate is completely unaware of this fact. Yes. Or whatever reasonable thing, maybe they don't know about the friendship, and he also claims I have very good friendship. You would say, at least let me not ask him, he may go and tell the other side. That's one possibility. I mean, or the person instructing him clueless. The first Director General walks into the room and he says, go and kill this person in Qasur. I mean, naturally, if someone wants to do a crime in a particular area, you don't get those people of that area because you don't know the connection with the other side. Or they may leak it or let them know. So we have not considered that aspect at all. Did the High Court or the Supreme Court consider that aspect? No. The other thing could be, now this is, yes, he is on the record. Yes, he's from Qasur. He's a sheikh from Qasur. I mean, it's on the record. By caste is sheikh. And from Qasur. From Qasur. एक और बात मेरे आते रुक गई। नहीं, अब आपने मुझे फिर भुला देंगे फिर मेरा। नहीं, आप भूलेंगे नहीं, आप पहले सवाल थोड़ा कर लें तो मैं तो हाजिर हूँ जवाब देने। नहीं, ये सवाल नहीं है। आपकी ऑब्जर्वेशन 100% नहीं, इस पे जरा सी अभी खत्म नहीं हुई बात जी। Now I'm proposing something else. I don't know if this was suggested at all. I just want to know because I've not read the entire testimony. Maybe, who do you have animosity with? Generally, the closest to you. Your own area. Yes. I mean, a person from Punjab will not have an animosity with a person from Quetta. It will probably be your own neighborhood. Yes. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। Could it be that he himself was a perpetrator? Who? Mr. Masood Mahmood, and put it on someone else. The Prime Minister asked me to do it. He admits knowing the person, he admits knowing the family. Was this line of cross-examination conducted or not? No, this was never conducted. Actually, the line of cross-examination on Kasuri Sahab was कि No, on Masood Mahmood. नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये बात की नहीं। Because would a prudent man also not consider, by I'm asking a person who lives in the same area to go and kill someone, he may be a good friend. देखे ना जी, क्रिमिनल ट्रायल में बेसिक जो पर्पस होता है। Maybe coming back to prudent test. मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, मुझे याद है, अब मैं जवाब दूँ। जी। क्रिमिनल ट्रायल में सरदार साहब आपके साथ बैठे हैं, टास्क ये होता है कि इस गवाह को हमने साबित करना है कि ये सच नहीं बोल रहा। अगली बात पे हमने नहीं जाना कि पॉसिबिलिटी क्या है। हम कहते हैं जी ये रिलायबल नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे मिल गया, मेरा आदमी बरी हो गया। ये आपने जो बात की है, इट कुड बी ए पॉसिबिलिटी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा कि वो किसी अपनी दुश्मनी से ये करवा सकता है। ये प्रोबेबल हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, मगर ऐसा क्योंकि कोई मटेरियल नहीं है जिसकी बुनियाद पर मैं सजेस्ट करूं, और इस तरह का कोई क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं है मसूद महमूद। एक आखिरी पॉइंट,
Welcome, sir. It took 3 years to prick his conscience. Was he waiting for the overthrow of the government? Yes, and then his conscience will revive? Because he's a very God-fearing man. अब मैं जवाब देता हूँ इसका. ये बड़ी सिंपल सी कहानी है. कॉन्शियस इसको तो इसी बात पे अगर आप कुछ भी ना लिखें तो इस बात पे इसको डिसबिलीव करें कि ये प्रेशर में आ सकता है. पहले एक के प्रेशर में था, उससे बड़ा प्रेशर आया तो उसकी लाइन ले ली. ये बिल्कुल वैसी बात है. तो ये तो आपको मैंने एक नहीं 10 सर्कमस्टांसेस बताए. खास तौर पे जब उसने ये क्लेम कर दिया कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को नो कह दिया, और नो भी बड़े सख्त अल्फाज में, तो उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो पॉसिबल हो नहीं सकती. वो प्रोबेबल नहीं, पॉसिबल नहीं. अगली स्टेज है इम्पॉसिबल हो जाएगा. आप उसको कहेंगे ये नामुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर जिसको आपने पेंट किया है इस तरह का, वो इतनी बड़ी बात सुन के आपको लंदन भेजेगा सैर करने और इंटरकॉन्टिनेंटल में ठहराएगा और आपको वो स्पेक्टिकल्स भी ले देगा हेयरिंग एड फिटेड, और आपके साथ वो फलाना टूर भी करेगा, और ज़ियारत में आपके गिर गए हैं तो आपका मेडिकल लंदन से करवाएगा. ये चीजें किसी स्टैंडर्ड से, मैं तो क्योंकि टाइम का मसला है इस केस के अंदर, अगर मुझे ये 3, 4, 10 दफा पढ़ना पड़ा ये केस, फिर जाके मुझे समझ आई है कि ये केस क्या है. इतना लंबा केस बनाया गया. ये भी एक टेक्निक होती है कि इतना केस लंबा कर दो, उसमें इतने कागज लगा दो कि कोई उसको पढ़े ही ना. अब आपको मैंने बताया कि सिर्फ ये विटनेस है अगेंस्ट जुल्फकार अली भुट्टो. देयर इज नो अदर विटनेस. बाकी सारी सपोर्टिंग एविडेंस है. अगर आप, और फिर इस पे डबल टेस्ट आपने अप्लाई करना है. एक टेस्ट है एक ऑर्डिनरी विटनेस के लिए, फिर इसके लिए फिर corroboration लेनी है. वो है ही कुछ नहीं. फिर गवर्नमेंट की तरफ से कौन है? गवर्नमेंट की तरफ से ये अटॉर्नी जनरल साहब. So, do we have anything on the record, or can you find out that Mr. Masood Mahmood, कुछ किसी ने कहा विटनेस, इत्तेज़ाज़ साहब ने जिक्र किया कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के जरिए गए. How did he leave the country? And what circumstances? My lord. Is it he chose to just move to America, or was some deal offered, or was witness protection? I mean, would the government must have some record of it? If you can just find this out. I will, man. ठीक. Now who comes next? Mr. Sir, first of all, this without your help, I don't think we could have done, and I suspect none of the council have done this much research and did it in such great detail. So we really appreciate your endeavor in this regard. And if I may join my colleagues in thanking you and your young और नॉट सो यंग एसोसिएट्स. नहीं, ये यंग ही है जी. मगर मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि मैंने कल भी कहा था कि 90% क्रेडिट इनका है. इनको अप्रिशिएट कीजिए. इस बच्चों ने बड़ी मेहनत की है. ये रात को 2-2 बजे तक मैंने इनको अपने साथ बिठाया है और ये काम करते रहे हैं. बड़ा काम किया इन्होंने. बहरहाल दिस वॉज ए ड्यूटी. दिस इज ग्रेट ऑनर फॉर मी. आई एम ग्रेटफुल फॉर द पेशेंट हियरिंग फॉर 2 days. And it was honor for me as well. I am grateful. Thank you. Everyone. Thank you very much. Shall we take a short break and return, and we can continue? आप मैं तो जाऊँ. कौन-कौन है? ये पहले हम जरा मालूम कर लेते हैं कौन-कौन आज कर रहे हैं. फिर then we can see how it goes. Next कौन आना चाहेगा? वो फारूक नाइक साहब आएंगे या कौन आएगा? रजा रबानी. हाँ? May I? आप you want to say something, इत्तेज़ाज़ साहब? जी मैं कर लूँगा. आइए. नहीं, आप सिर्फ हमें बता दें टाइम. हम जरा भी करना चाह रहे हो. हाउस कीपिंग कर लें. हाउ लॉन्ग विल यू टेक? जी आप इधर देना. आ जाए ना माइक पे. जी जी जी. हाउ लॉन्ग? क्योंकि बहुत ग्राउंड तो कवर हो गया है. कुछ नए पॉइंट्स कहिएगा. मैं जी नए पॉइंट्स. हाउ लॉन्ग? I will be dealing mostly. हाउ लॉन्ग? सर हाउ लॉन्ग? 1.5 घंटा तो लग जाएगा. नहीं देखें, हम इतने लंबे नहीं खींच रहे हैं इस केस को. वी वांट टू ब्रिंग इट टू अ कंक्लूजन. 1.5 घंटा देखें. नहीं, मलिक साहब ने बड़ा कवर कर दिया. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब तो माशाल्लाह शायद बहुत कम होता जाएगा. तो जरा अगर जल्दी कर लेना तो then we can, as you know, my lord is retiring, then again this case will, I mean it was, you want to. नहीं इस वक्त आफ्टर मलिक साहब
presentation here. We would like it to be concluded. जी तो Quite frankly. और what maybe you can do is wait for the others and see maybe you आपका 5 मिनट हो जाए 1.5 घंटा से. नहीं, 1.5 घंटे से 5 मैंने मिनट आपका एक इंटरव्यू देखा था कि आपने कहा था मैं 30 सेकंड में केस फैसला करूंगा. नहीं. You don't stand by that statement of yours. फारूक नाइक साहब यही बात कही थी. इत्तेफाक साहब ने 30 सेकंड की बात कही थी. वो मैं कहता हूँ वो वीडियो चला दें. हम आपको जरा ज्यादा दे देते. मेरी बात से पहले आप वो वीडियो चला दें जो फारूक साहब के पास है, नाइक साहब के पास. चलें, ये सही है. फारूक साहब आपका क्या है? आप हाउ लॉन्ग वीडियो? Videos and not more than 30 minutes. अच्छा, who else is there? Razar Rabbani Saab is making separate submissions. Most of them has been covered. Because we don't want to lose what we have registered We here. don't want to lose that effective presentation either. I compliment my learned friend. He's actually been your learned brother, and but he's joined us as a friend. एक सवाल रहता है जो मैंने पूछा नहीं इनसे. हाँ, वो आपको पसंद नहीं आएगा. नहीं, आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा. तो ये 10-12 साल ये केस आपने चलाया क्यों नहीं फिर, जब आप इस तरफ थे? आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है. ब्रदर रबानी साहब, हाउ लॉन्ग? You by all means, if you write something, we're good. Sir, I've written, and I'll be submitting that, and from that I'll be making a synopsis. I will essentially be on only 2 issues. Number one is the impact of martial law. Time. And time about 45 minutes to an hour. कसूरी साहब, आप कितना लेंगे? Are you representing yourself or do you have a counsel? जी, मैं खुद करूंगा. जी. मैं एक How long? Time पहले बता दें. इतने लोगों को मैंने अकेले ने जवाब देना है? नहीं, आपने किसी को कोई जवाब नहीं देना. आपसे पूछ रहे हैं टाइम कितना. जवाब कोई ना दें आप किसी को. आप सिर्फ अपना टाइम बता दें. Minimum 2 hours. ठीक. जाहिद साहब, how long will you take? About 15 minutes just to finish up. Okay, now we can do one of 2 things. Either we can take those persons who are just going to take very limited time first, so they can go, and rather than one person takes and they come back again. I think you're coming from Karachi. Anybody else, or these are? As far as federation is concerned, after what? No, you are coming last. Gee, but probably unless something, I have to say something after Mr. Kasuri has submitted. But what Mr. Justice Manzoor Malik has submitted, we are going by those. I will also be placing my submissions. Many of them have been actually. So हम ऐसा करते हैं, we come back at 2:30. Is that all right? And shall we take Zahid Saab first, if you don't mind, with consent? Because he says 15 minutes, and we can at least cover as much ground. After Zahid Saab, I'll take up some videos and then. आप अच्छा वीडियो का इंतजाम कर दें फारूक नाइक साहब के साथ. बिकॉज इत्तेसार साहब ने भी कहा कि पहले वीडियो आप देख लें. आप कैन यू मैनेज वट एवर द वीडियो यू वांट इट शोन, सो वी कैन सी इट. ठीक है. और अगर बहुत सारे इरेलेवेंट है, कम टू द पॉइंट वाला कर दिया. वीडियोस विल नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स. आप जरा कोऑर्डिनेट कर लें. एंड आप अपने कोई जूनियर इनको जी एंड बैरिस्टर इफ्तिखार इज हियर, ही विल डू द नीड. ठीक है. तो वी एंड आई विल टेक 30 मिनट्स देयर आफ्टर. सो वी विल कम बैक इन हाफ एन आवर. इज दैट गुड? जी ठीक है सर. Once again, Manzoor Malik sir, thank you very much. To make my small we will give you statement. fullest time. Just 2 minutes to see. Ji. Sir, my first question is, have we crossed the bridge of admissibility since Mr. Malik, you see, he has addressed you at length about the nitty-gritty of the case. The prudent man impressions which he will gather from his presentation is that he was more of a defense counsel than a friend of the court. Regarding your thing about, we're not going to cut up this case into 2 bits. We're going to hear everything, and if naturally if they don't cross the whatever constitutional or legal restriction, then all what has been said would become irrelevant. But if they do, naturally it will become relevant. And whilst crossing that, we may, I'm just really thinking aloud, and I should not say it, but I'm not speaking for my colleagues, but it depends
it's not a question of what minor irregularity has been committed, but something so grave as to shake the confidence of the court or something like that. Yes, we will certainly hear you. And your opinion, you are entitled to your opinion about Mr. Manzoor Malik, but he was appointed, he didn't come forward himself, we chose him as an expert, as he's criminal expert, which maybe none of us have the same level of ability which he has, so therefore his choice was in your presence. And you had agreed to any objection taken by anybody to the choice of amicus. We did not appoint such amicus. Only the persons who were not objected to, we appointed as amicus, and you were one of them who did not object. So he's done his job towards the court, and if you like it or not, that's it. So we will return after half an hour. He has gone into nitty-gritty. That gives an impression of a defense counsel. Then an opinion. But that's my opinion. Thank you. Thank you. Now I'm free, sir.